new mode is coming to MLBB, Chaos Clash. Team up in trios, begin at level 3, and fight on a fresh map with no minions or turrets. During the preparation phase, grab Chaos Fragments to boost your power. As the match goes on, the Annihilation Tide emerges, pushing the action to the limit. Here's a closer look at how this new mode works. Chaos Clash is a multi-round 3 versus 3 mode. Wipe out the entire enemy team to win the round. Teams lose HP each time they are defeated. If a team's HP drops to 0, they're eliminated. Rounds continue until only one champion remains. When there's an odd number of teams, one team will sit out the round. After certain rounds, heroes automatically level up and earn gold. Use this time to buy equipment and boost your power. All full equipment except boots costs 2,000 gold. From round 11 onwards, teams earn bonus gold. Adapt your loadout and strategy to stay ahead. At the start of each round, you will receive random Chaos Fragments that boost your power. You can also refresh fragments to re-roll their effects, with 2 refreshes per round. The game offers a wide variety of fragments, each with unique effects, so you can mix and match to create your own playstyle. For example, tank fragments make your hero tougher and deal damage back to attackers. Marksmen who pick range-enhancing fragments can safely deal damage from afar. And that's just the start! Countless other powerful fragments and combinations are ready for you to try. As rounds progress, the Annihilation Tide starts shrinking across the map. Heroes outside the tide take sustained damage. Master this mechanic, and it can swing the battle in your favor. For instance, heroes with knockback or displacement abilities can push enemies into the tide. Surprise your opponents and watch them struggle against the sustained damage. The new 3 versus 3 mode, Chaos Clash, is coming soon. With a variety of Chaos Fragments, every match brings a fresh experience. The Shrinking Zone adds fast-paced, thrilling action, and new map buffs further empower heroes. Exciting, innovative, and powerful new strategies await. Are you ready to try them all? Clouds, follow my flow. Welcome back, ladies and gentlemen, to this wonderful evening to spice it up. We got MOBA Rising Stars Season 3. The grand finale is here between the teams Shadow Esport versus YAMA Esport. Now, these two teams, on particularly, they have been fighting for the top spot since beginning of the round robins, and now they clash once again in the grand finals.
to rise and pick up the cup of MOBA Rising Star and join and to witness this battle. I'm Sasuke and joining by me is the man Scared himself. Oh my god, thank you so much for that exciting introduction out here, Sasuke, because as you rightly mentioned, this is going to be the peak of ML out here right now in the MOBA Rising Star Season 2, or rather Season 3. We've witnessed the journey of both of these teams, right? Shadow Esports always moving in from the upper bracket. The previous match they faced up was against Peak, and I'll be honest, they were looking very solid in that game. While on the other side, if you're talking about YAMA Esports, you know that this team has shown up multiple times, not just in this event, but also in few of the previous events as well, and they're always the underdogs. And you can never count this team out. And finally, after such a long time, they've got an opportunity to try and claim the trophy for themselves. But the big question is, will Shadow allow that to happen? Oh, that's a wonderful big question, but it all depends on this best of five series. What are they going to draft and what will be the counter draft? With the recent patch, left and right situation will be there, but the big thing is which of the team is the one who have adapted to the recent patch, the new meta, and also the drastic change onto the core mid lane heroes, especially the Zushin, which was a priority pick for a lot of teams, and especially for both of these teams too. With the adjustment, I'm really liking to see since it's a now a high risk, high reward kind of a player hero. Let's hear from the crowd. Make some I kind of like the noise for bans that are yours coming in, truly. at least for the first few, right? Because there's been multiple tournaments where we have not seen that Basha being banned out. If anything, it still is just as broken as ever, right? Yes, I understand there's been a few changes in the meta. There's a lot of different things in the patch notes. But I think so. You, me, and Kronos, all three of us were sitting and discussing about the same thing. How will the current experience the impact euphony of these? And I don't suffering? think so. It's going to change a lot. Most of it is still going to remain the same, apart from the fact that now just a certain few tanks have got extra damage. Zushin, instead of providing you as much control, will now deal a significant more amount of damage, where people will have to respect that. So, right, there's a few subtle changes that are going to be hopping in though, but I'm pretty sure about one thing. You've got to ban or pick a Leo mod. Oh, that's a thing. But again, hey, Leo mode aside, there is also a Lucas which is kind of getting the recognition into the jungle era itself. Right after the Hayabusa got the shadow nerf, the quad shadow, The night the sky length tells reduction, all. it's significantly nerfed that it kinds of hit the shadow assassin too hard. Like, hey, it doesn't feel right, but Lancelot does feel the soul assassin jungle be crowning into the jungle era. Right now, onto the banning side, Esmeralda being banned out. Seems like they are on to Lapu Lapu pick, but hey, This land Yama is our Esports they got homeland, second and pick. it will Are they soon going be for the our gamble, burial Lapu against Yu Zhong? Or perhaps they are onto something because once you are onto the second pick, you are prone to ban out a Lapu Lapu. If not that, the second or third hero you will be looking forward would be Kalia or a Grok to ban out. Time to drop the beat of the This will help you flash. to set things up and have that initiator in your team. That can actually work well with your composition. Yes, I agree. I'm not quite a big fan of the Joy ban, but probably thinking it's Among some the kind of a strike ban planes for Shadow exists Esports, the because you've got a Kimmy, equilibrium, you've got a which Jushin, I was you also made have the Eve, for. and we know that Eve has been the priority for a very long time now. Not just in the Indian beta, even in the international beta, you can see Eve being picked up way too frequently. Now, since that's been locked in on one side, I am expecting a Gato for the answer on the other end. We do not Butterflies want to give the born Eve by Gato thy on one Hey, wish, side, guided yeah, just by because lantern's light. it would lead to a proper kill box composition. Well, that's certainly a thing, but hey, you're also missing the point that there is a Kalia and also the Grok. Like all those three Let them play meta the Roma hero. open I will be the with truth response this to each world other. Yu Zhang desperately being locked out needs. just to provide the backline jumper and a threat, a potential threat to the Sand EU. But rises when I give this the is a big word. question, Wait, is that a Yu Zhang or we are seeing a Khalid? I think it's going to be a Khalid on Rome right now. Potentially. Now,
I understand the fact that, you know, Khalid kind of provides you the same utility which a Gato would. But I just feel that Gato is a better Khalid in most of the games now. So, Shadow Esports, with the Jushin Khalid locked in on one side, you can answer back with Let them play the hero. a Gato. I will be the truth Gato this should be world. good. Fight! Fight for the ultimate But answer! that actually What is about, Hilda using? oh, it doesn't feel that bad, but hey, again, Hilda against Zushin, you would be zoning out quite hard. But in the early game, a Khalid against a Hilda. Now, the map is expanding river, so there is a limited area of bushes. So Hilda won't be able to gain that much of healing ability by hiding into the bush, or you know, that See value much in of me? the zoning should. potential. But since it's the expanding river, I do think like Khalid would be having an upper hand in terms of mobility and in terms of movement speed. Push the shadows that plague this world. More concerning topic would The Immortal One chose the me to fact how this vanquish the veteran is gonna ban out shadows against that the plague this world. technically had to go for this one, right? You can't really go for the assassins considering the Hilda and Yu Jong are just going to make your life miserable. So there's only a few options that are left for you right now, and Fredrin is one of those. But now since you've gone for Fredrin, it kind of reveals the plan that you will have to pick something that can carry your game in the late game. So a Harith is something which I'm looking at for their gold lane. Otherwise, they will not have a proper amount of damage if they decide to go for the double fighters in those lanes. And Yuzhong has been picked up already. Lapo has been banned out. Magic is my life! If anything, Shadow Esports can actually choke out that pool too. And I was mentioning about the Harith. They realized that. They've instantly banned it out. Now with the Granger and Hal banned out, the only potential option would be left is a Claude, but it really suggests like how or who is he against, leaning against, and also into the team fight, is he going to provide a lot of damage? Because there is a Hilda, he will be constantly a threat for the Claude if it's going to be a potential gold laner for YAMA Esport. Considering the fact like there is the Hilda and you need a gold laner, the damage dealing aspect, I think like a I'm fighter born with or talent. perhaps an Alice would be a great into the goal lane and just go with the damage dealing hero like a Thamos into the EXP lane. I mean, let's be honest, I'm not quite a big fan of that, considering you need some kind of range to actually reach Eve. And if you're going to pick a couple of melee heroes, then that's going to become difficult. Now, yes, Alice could be that one key which might reach the backline, but that alone is not going to cut it. You need someone to deal that damage, which you mentioned. If Thams is in the EXP to deal the damage, then he doesn't Come on, have the Dexter. range. It's our showtime. Yu Jong and Hilda will not allow him to move forward. And guess what? You mentioned about the Claude. You said it's one of the viable picks in the gold lane. It's been taken care of as well. Now, the only other picks that I can think of, one of them is Irithel. Oh. And Irithel, now that is also a viable option. But if we look out like, hey, let's not go with the marksman, and if the BGs are been banned out like the Harith, the only one which is kind of a good. Now they do need a range. I am clearly blank, but this one particular hero which comes to my mind is Carry. Now, I am here's the not thing. the only one Yuzhong bound by and these Hilda will chains. be jumping towards you. You have the Carry alongside the Fredrin. Smooth and enough damage alongside a Zushin. So this three deadly pair combination do such things up. The only thing concerning is he needs to be out of the real world manipulation, which could be a constant threat and They call me a big hero drawback because for I saved Carry. my nation from falling apart. It's tough, man, for YAMA Esports right now. I'm really liking the way Shadow Esports are drafting. They've got Hilda and Yu Jong for the dive. You've got the Yi Sun Shin to follow up along with Shadow, who will start with the kill box with the RWM. and watch the world They're going to lock in the Xbox as well for the goal lane. The double fighter comes in. I like this draft. Yeah, there's three pretty tanky, beefy heroes. You've got the true damage coming in from Xbox as well, and everyone is melee. Yama,
What are you going to lock in now for the gold? Irithel is the only thing. 1-1 doesn't seem viable here. There's quite a bit of movement speed on the other side. Carry could be a pick, but way too immobile to try and run away from the Yuzhong and the Hilda. Bruno is something that I'm looking at. Bruno against Bruno and Irithel, but they lock on to the Nate, and oh, even this kind of a hero is quite good, but you know, they got a lot of magic damage, like into the okay, not Phobius is not a is not a magic damage hero. I get this, like hey, the old Phobius was the magic dealing hero, and still it's been stuck onto my mind. Whenever I see this, hey, it's a magic damage hero until I get a bonk from the Phobius, like hey, he's dealing a physical damage, not the magic damage. Is the big thing, man. But overall, yeah, but overall, I kind of like how they were thinking out of the box. Well, three of the heroes were designated ban out in terms of gold lane, and just they were looking like, hey, what could we pick? What could we pick? The Neaton pops out for the side of YAMA Esport. The draft is quite looking tanky, but there is the Xbox, so their whole primary key would be to farm up Neaton as soon as possible to get him to the power spike, and then they could go with the Stampede composition they have with the Phobius, with the Predrain, and also with the Khalid. And considering it is going to be expanding rivers, you'll have a lot of mobility as well coming in from those river areas itself. Ladies and gentlemen, as we move into the game number 1 of this best of 5, you're watching the MOBA Rising Stars Season 3. It is the grand finals here. We've got YAMA Esports right now on the blue side, Shadow on the red side. A pretty good start, considering like, hey, Shadow wants to go for the okay, it's on Shadow on the blue side. Okay, a big damage dealing aspect into the mid lane. Absolutely. A big amount of burst coming in though. Abyss TZ will have to get his HP back up. So was forced to use up the quicksand garden between 3 people, but they're both gonna be A-okay. Onto the top lane, things are looking pretty A-okay as well. It's a fog against a Nathan, but I think like YAMA Esport, they are trying to rotate towards the EXP lane, trying to give the vision or more control to the Phobius. I don't think so. Look, that is a viable option. Like, hey, Xbox does seem to be a good thing or an easy target to kill once the frag armor is down, and in the lane itself, Neaton do has the power spike or do have the ability to just chunk out the frag armor. Yeah, that's something they can definitely focus on out there. Turtle now being spawned up. Just seem like the play, but the turtle is already spawned up. YAMA Esport on to the turtle area, securing or not just securing, but the first one in the mid lane. Oh, that was a big one coming in. The jungler being taken down now. With that, YAMA Esports can actually take this turtle with no contest, and Shadow do realize that, but guess what? The position is a quit off out here from Voila. He's got to go back, but in the lasting insanity, cannot run away as Abyss TZ gets bursted down to Dark. The only man who can do something with the bonks coming in from Phobius, but not a lot of opportunities for him. Hold on a second. Someone stop this guy, and it takes all 5 of them to do so. And during this entire conundrum, Toby is able to take the gold shield from up top. Talk about the opportunities. This guy is the opportunist. He takes and he just not takes. He grabs it like, hey, we got the turtle. We are losing the fight, but I'm okay with that. But again, into the midst of the fight, Hilda goes down. A burst damage coming in from Violet. The Zushin is now providing a great threat in the mid lane with the recent changes in the patch. I told you, right, that it is not going to be as much crowd controlling per se, but more so dealing that damage. And right now, that's exactly what's been happening. Another knock-up coming in. There should be a pick onto Moon as he flickers out of the harm's way. And still the chase goes on. Mountain Shocker catching absolutely no one. And now it's, what, 500 gold lead coming in for YAMA Esports? Maybe we're going to go in for a bit more chase out there. Wink. Or see who's the lasting insanity now on the back of it.
It's still YAMA Esports lead. Oh, indeed. Even though they caught the first turtle into their hands, the fight did concluded into the side of Shadow Esport. Last man standing. I mean, it was, I think, a 1-4-3 trade. Uh, Shadow Esport did manage to take, but they did Moon? manage to take it and Moon? even it out again. This might be a blunder. Moon seems to be in a problem here as he gets picked off one more time out in the open. Even though his team actually gave out the information where the players are, he still gets caught. And this is the problem with the Hilda right now. Oh, Right? in the bot lane, off camera. That's a big pick. Yeah, indeed. And with that, the rotation's going to come in too. But the real world manipulation up on top. You can't catch a bit easy as voila is on your face. Both of them could be picked up instantly. But Ray run back to the safety now as Pink. He opts in. Oh. But look at the smartness coming in from Raden. He just makes sure that the Xbox is not going in the direction of voila. As he still picks one. That's Ben 14. Wonder where is 10. 1-1-3 on band 14. Not a good score for this early game, but hey, they managed to take down the first tower in the top lane, and now a brilliant switch coming in. Toby onto the farming simulator. Like, hey, he's playing a different game in the Mobile Legends itself. Like, hey, my whole criteria is to get the items I need, and then as soon as I get the items, I'll be joining the team fight. Even though without Toby. Shadow Yama Esport, they are doing a-okay right now, but once the power spike comes from the Nathan, it's going to be a big problem of who is going to be marking him down, because right now all we are seeing is not a team fight, but the clusters of it, like not fully committing Shadow, but a communication problem, or perhaps that could be the thing. Like we see, like one or two members are engaging, and the rest are like, "Hey, we don't need to don't need to fully commit the team fight." This kind of a lingering situation did cost him the fight before the turtle. They lost the second turtle again. The back of it now. We do have a small pause, ladies and gentlemen. It's a slight bit of connection issue. We're working quickly to fix all of that, so you don't have to worry about it. The team in the back end is working there hard. Now, coming back to the conversation which you mentioned as well. Out here, it just feels like the Hilda cannot really provide you any kind of map control and room to work with, right? With the Khalid, I was kind of doubting it a little bit. I was thinking maybe it might not be the best, but considering the poke that's coming in from the Jushin, he's always catching Moon. And then the Khalid with the Crescent Scimitar is also landing in quite a good amount of damage there. So it's that early game is working out for them. I was not expecting that to happen, but it's still happening. And you rightly mentioned, Toby is farming onto those side lanes. He's just making sure that on the Nathan he gets those early few items. Now I want to have a look at the itemizations as well once we move in the game to try and figure out where these players stand at the current standpoint. Well, the main issue is like, hey, Shadow Esport without the Toby, like they are losing against the Yama Esport just because the damage coming in from Zushin alongside the crowd control from the Khalid is way too much for them to handle. And also to mention, like the Fredrin itself is slapping them left, right, and center with the spear in his hand. With this a 4v5 situation, it's not looking good or that positively in terms of for the side of Shadow Esport, but how are they going to deal once Toby joined the team fight? Right now, it's a 4v5 situation, as I mentioned earlier itself. It's going to be tough. And here's the thing, right? If in case Toby makes up an early Divine Glaive, then things are going to get even more difficult for the other side to try and deal with. Oh, one more pick off. Now, I kind of wanted to see those Radiant Armors out here right now, but we'll check that in a while. Another pick off coming in on the Yu Jong as they still go for a bit of an overcommitment there. Easy, barely breathing. Wink opts another perfect time to try and take him down. Now goes in with a flicker forward. Voila will still survive. And he's just now in a no man's land. Wink. He cannot do anything out in the open. And guess what? Toby joins in at the right time. Says Kamui and then sends Moon backing back home. Yama Esports. A commandable lead of 2,000 gold now. Yes, indeed. And look at the itemization. Sky Piercer already into the hands of Wiley.
With the 3 kills, I think he has already opened the bank account onto the Skypio, so with 10 stacks into his hand. And the itemization from Nathan is quite stupendous. He's going for the attack speed instead of the damage dealing items. Right now, I think he'll be focusing onto the Divine Glaive. If not, the Holy Crystal will be next up for the grabs. I don't quite like what's coming in from Moon, to be honest. I wanted to see him go for a early Radiant armor, but rather went with the Fury Hammer along with the Dreadnought armor, though. I understand the idea that he needed a bit, but considering how there's Jushin as well as the Nathan on the other side for a proper straight-up damage, instead of the Fury Hammer, I wanted to see a bit more focus on the defense now as the invade goes in yet again. Lemon losing out on his own purple buff as well. So that's going to be a bit of a problem. Out on the other side, he's not even getting the access of his own jungle now. And that too when the mid tier 1 is still standing. Imagine what's going to happen when it falls. Oh, I think they would be like focusing on just engaging them. But again, entropy being used in a decisive way, but Hilda goes down. Big one now as even D will also be taken out of this one. The Crimson Beacon used up along with the Lantern Flare. He picks up 2 of them as Ben 14 has got no Gwen Tennyson to save him this time. A big play from YAMA Esports, and Shadow I got no answer. A win-win situation for YAMA Esports. When this thing turns out like, hey, Shadow, it's our time. Rising and emerging from the shadow. But YAMA just push them like, hey, just go where you might be looking for the Lord, which will be up against 25 seconds, but they are looking quite hasty as they are marching down towards the second bottom tower. We'll still continue on the fight out here right now as Moon could be in trouble. Knocked up, taken out, away from the tower as the RWM is dropped down. But guess what? Rahan just moves around, smacks the ground with the Appraiser's Rad to push away Ben 14. And the tier 2 in mid is not going to be safe at all. It's not even 9 minutes in the game right now. They've lost their mid and top tier 2s. Just they're standing, and guess what? It could be possible that even the passive on the tower is going to be used up at least from up top. Now that is big. Oh, it was just 1 centimeter away though. Yeah. Lord, it's been spawned, and YAMA Esports are looking for an uncontested because the goal lead is insanely into their favors, and also the itemization along with an Nathan Toby onto the power spike with the Violet onto the Sky Piercer stacks. I believe it will be around 30 to 40 stacks with the Sky Piercer on his hand, and he will be dealing an incredible damage with those stacks, and also the recent changes which has turned it into a crowd control rather than damage dealing aspect. But look at the Raren, it does not fear itself. Straight up bully mechanism out here. Moon. It's going to be spotted. Knocked back by Dark. No problems there whatsoever. The passive up top is finally going to be used up as the mid one still holds. But the Lord, man, it's marching down in mid. It's going to be tough to defend, but they have got the high ground defense as well in the form of E with the RWM. You've got the zone out potential, but Mountain Joker needs to be used up properly. A bit of a tough scenario there, and Toby has completed the Holy Crystal. If you do not silence this Nathan, he's gonna burst you down because there's not a single magic defense on Shadow Esports right now. You mentioned you need to shut down Toby before the powers, before the fight, but again the RWM being popped up. Yushang using the Black Dragon form. It's gonna be a big one out here as the entropy is popped up again. Toby still wants to catch all of them. Oh my god! A mega bomb coming in on 4 of them right now, but their HP is barely standing. Ben 14 catches one as Voila is gonna be running back to safety. Dark pretty low as well, and they have to respect the Eve and the Yisun Shin. Toby, he wants it. It's an instant kill coming in. Ben 14 didn't realize what hit him. It's like, hey, I'm here, and within the next second,
With a snap of a finger, he just turns into a dust again. He's Oh, looking for the entropy with the Khalid, looking for more blood, more kill into his arsenal. But right now, a systematic disciplined way coming in from Yama Esport. You did mention that they need to shut down Toby right before or into the team fight. But the question is who? The Zhang, he needs to go there. By the time he reaches there, he's already 50%, 60% HP down, which does not lead him to any sort of conclusion. And even if he reaches there, there is Raren alongside Wile, who's just gonna harass him down with the insane amount of crowd control. So definitely, they do have a wink onto the Xbox, but the Fraga armor is just popping out way before the team fight even occur. that's again the range of the poke coming in from YAMA Esports. That's all. Entropy used up. Mid NF gonna be bursted down and instantly make sure they're gonna get two of them. As Default as well as Moon get instantly destroyed now. There's no Praga armor to say wink. As all he can do is close his eyes. The RWM dropped in, catching one a bit easy. Will run back to safety. Lemon's gonna answer back, but the base was open. And all you need is an 8-in with Entropy to close this one out with the first one going in for YAMA Esports. Big plays. It's Now also Rolf was down. just Right on. focusing onto the Yeah. micros and the aim, the goal. Like, hey, we need the win. It's all bonkers if you go for the kills. It's never gonna satisfy me if I don't win the game. And with that, look at the damage it's dealing. 31% and 89% tower push. This mine was on the mission. This is the itemization, man. At this point, that's where the problem was, because by the time Moon built the Radiant armor along with Wink and Default, there already was a Divine Glaive by Toby. And guess what? He's made the last item as the Divine Glaive. And it was fully unchecked throughout the early mid to late game. So if that's gonna happen to the Nathan, you're gonna allow him to farm up to this point, then this is going to be the result. It wasn't really as much of a problem about the composition as much it was for those items, right? That's why I mentioned I want to see some early Radiant armors, and if that happens, it's going to become pretty easy to play against the other side, because they won't deal you as much damage. So you can take some map control away while constantly going in for the poke and harass coming in from the Eve. But apart from that, yeah, still a pretty solid game from Yama Esports here. With the Khalid, with the Jushin, they were able to constantly poke out Moon, deny that map space to Hilda, and once that happens, Raden was easily able to farm upon the Fredrin. Well, the main concerning idea is like, hey, Lemon did started his off rotation from the bottom side, planning on going to the goal lane, but it was the early engages coming free from Yama Sport, which constantly kept Hilda alongside you into the mid lane, zoning them and making sure that elimination doesn't go upside. They made him to like come into the mid, take the fight, and leave Toby alone for the whole team fight. Need no protection from the rain. That was the biggest thing, man. And after that, now Shadow Esports will have to brush it off. The sides have been swapped. Yama are going to be on the blue side this time, Shadow on the red. So things might change a bit again. Let's hear from the crowd. Or Make rather, some even the noise previous for time, if I'm yours not wrong, Yama truly. was actually on. Rocks Yama was on the red need side. no protection from the rain. Basha, Yes, indeed. But Easty. hey, Baksha again banned out. I think, oh, yes, it is a respect ban for the side of Raiden because they know, like, hey, if Baksha is open, they are going to pick it up no matter This what. land is And our homeland, Baksha, and it will alongside of soon be our Barami's burial composition, ground. Yama Sport, they are running it over and over, time and time, and it does work wonders for them. Experience the euphony of suffering. Lapu Lapu along with a Granger. Again, comes out as a respect ban. Lapu Lapu fair enough. Granger more of a respect. We don't really see him in the first few banning phases. You have a few other priority picks there.
But now I'm main looking for a concerning Zushin fact is ban. like, yeah, even I was gonna state that like, hey, this could be the reason like they would be banning out Sushin. But if they ban out Sushin, you against the Farsha, or you need to take out something which could be able to zone out EU because 99% chance like Yama Esport they will be securing EU. If not, Kimi is open for the grabs if Zushin is banned out from the Shadow Esport. Butterfly is born by thy wish. My tail's been itching for a real fight. It's a Kalia ban though. You were Oh. mentioning about the pick-off potential of the Kalia composition. Butterfly is born by thy wish. And there's the respect Guided by ban of lantern's Zushin. light. You can't really leave it open now. But Yama Esports, they can lock in the E for themselves. Now that Kalia is out, only Gatotkacha remains in the room. Also, the Grok, if they want to go for it, and if not, Among the Khalid planes also exists is the available. equilibrium, Shadow Esports want to which capitalize I it. was made He for. will secured just as it was, but they want to go with the Farsha into the mid lane or Kimi, or just lock onto Khalid or no Gatotkacha, and perhaps a Yushong again. Let them play the hero. I will be the Muscle of iron, bones of steel. Gato and Yujong. I like the opening picks from Shadow Esports this time around. Yama Esports locking the Eve. Good one. Nice call. And the Gato Yujong on the other side. That has like a cherry on top. But now since the CC has been banned out, who are you gonna pick to try and face up against them? In the jungle, this could be a good option to pick up either the Lancelot or Detective Fredrin on the case. 24/7. Fredrin. to be The honest, Killbox See composition value too, in of me? course. yeah, I was You thinking of a should. Fredrin as well. Good call, Sasuke, because both of the people are gonna dive in on them, and Fredrin wants you guys to hop onto him. I am not the only one. So he can Now, if you need more of the crowd control, Ruby onto the gold lane or even in the XP I lane am not does the work only one magic. bound by these Even the crowd chains. control, but hey, Dark is gonna go with the 4 The wheels. Immortal One chose me to vanquish the shadows that plague this world. To you. Bit of a pocket pick coming in. Not quite sure if that's gonna work out that well though, but It is in could be possible. despair that I see the fondest hope. We'll have to see. Suyo- Because, again, I think so. The good thing about Suyu is the execution line that you have, along with that can really match up well against the Lancelot, even the Fredrin. But it just sometimes become a bit more difficult to deal out the damage, specifically to that backline if you don't really have a proper access to it, which he does not right now. Considering there's a Phobius on your face, there's also the Fredrin. So it is going to be difficult to deal with. And now they banned out the Nathan as well for the respect. I'm not quite sure if that was really a good or necessary ban there. There's still the Harrods available. Perhaps the next ban would be Harith, but hey, Kimi coming out like, hey, Shadow Sport, they are yet to capitalize onto the mid lane. With Kimi ban, I think this could be an opening for them to go for a Farsha. If not, a Lilia would be a suitable choice given the fact that there's a melee hero and with the black shoes, he can just get out Fight of the for the harm's way. ultimate answer. And the burst potential with this kind of comp, Only it is a love good to go and night situation. are everlasting. Really liking the draft there though, but I'm not quite sure about that Sicilian ban. Maybe a Farsa would have made a bit more sense there, because you need some artillery though, and now considering the Farsa is open, I'd want Shadow Esports to pick that up. You can lock in the Farsa, Gato Yujong you have in front of you, try and help you out, and considering you've got the Suyu as well, now you can go for the double fighter too. Maybe picking up either the Ruby or even the Alice into that gold lane, or just pop the Yujong Alice into those lanes. I would actually like that composition a little bit more, because for the late game, now you would have the Farsa's artillery. Where there is light, there That's are right. also I think shadows. with this kind of a thing, like they should provide Where and there go is with light, the there are Farsha also first, and they could shadows. capitalize. Oh, a Luo against an EU, even though the range is kind of a big question mark. But the place that Louis will be able to deliver is
something which Shadow Esport might deliver today. Yeah, possible there. It's again just a straight up front on fighting composition there, but you have the mid control with that. You don't really have a lot of poke with the low E. I'm not quite sure if you'd really want to make those diversion plays along with the rest of the members. Sand There's no rises one to when I give protect the you, word. so that's a bit of a problem. Now there's a Magic Khalid is on the Has other is side as open for well. Yama Esport. I had a Khalid. It's a kill box again for Yama. And this one looks even more deadly than the previous one. Oh, just because they got the EU, meaning a proper setup to just go and charge with the Stampede. A perfect So, setup this time. Xbox What pick could be the counter for pick? Shadow. And Esmeralda is still open if they want to go with it, but you know, the damage concern is still lacking from the side of Shadow Esport. If they want to go for the Esmeralda, go on to the goal lane, not sure that it will be more than enough to burst down all the tanky composition from Yamaha. It The could hunt work. begins. I can see an angle for it working. But they've decided to go in for the Ruby in the gold lane. I was thinking either an Xbog or an Esmeralda, which could have made sense. But now, as I said, right, you don't have anyone to protect the low E, who doesn't even have a proper mobility. Like, at least with Farsi, you've got the wings by wings and also the flicker to try and reposition. You don't have that luxury with the low E. So you need someone to frontline for her. Someone to actually stop the onslaught of the Khalid as well as the Harith. And that's where you are bringing in the Ruby. So again, with just that one pick, I think so they've kind of handicapped themselves. So Yama Esports should have the priority in the draft at least. They do have the priority, but it all depends on the mid control and the burst potential from the mid lane itself. Now, you with an item or two, she can deal a lot of damage with Khalid presence over there. It's not a biggie, but the more concerning reason is how is Shadow Esport gonna gain the magic burst control with the Luoi and Gatut Kacha into the mid lane. Because those early team fights, those early snowball which they need, they all depends on this to Roma and mid laner alongside the jungler. Broken balls. Too many chances of hopping in and ganking from multiple angles. I don't like it. Here's the thing. This is I just got an insane idea. If this map was a dangerous grass, they have the Luoi, so it could just maximize the threat potential if the diversion plays was on point. That is a big if, man. Big question mark on that. Normally that's not how easy it is, but here we go, ladies and gentlemen. Another chance, possibility, and an opportunity for Shadow Esports to either equalize the scoreline, or with this win, Yama Esports can actually move all the way towards the series of the championship point, and I'm pretty sure Shadow would not want to let that happen as we move into the Land of Dawn again. And guess what? Up top, quite back and forth coming in. Default now wants to push back a bit easy as he's got to recall right before the turtle, but still, Dark is at least having his own waves. And that's kind of a good thing, but this time I believe Shadow needs to focus on to the Harith, given the fact like, hey, this was the bigger disadvantage that they left to be alone to farm, and that did cost a big, massive, the blow which they were not able to overcome in the previous game. If that mistake repeats in this kind of a game again, a Ruby with the crowd control, she can definitely stop, but the damage is something that Shadow Esport needs to look out for constantly. Right now the turtle is on there, Black Giant form being used.
Sending it back all the way. The rest of the members have got to be pushed back, though Moon doesn't have the ultimate now. He's trying to zone in Rarin. You mentioned about the Black Dragon, but guess what? This ain't looking a hefty dragon. This is being a bursted down dragon. Instantly taken out, though. Lemon on the other side with Sasuke. Catches one, but it's not enough. A second answer on the other end. Execution comes in on the Appraiser's Wrath. It provides enough sustain to Rarin for Volar to take down Lemon. He just squeezed out every single bit of juice out of him and then made the shake of it. YAMA Esports, again with the early advantage. With the turtle in the hands and with 3 kills under their bags, YAMA Esports looking into a power spike with 500 goal lead and looking to capitalize it again. A 1v3 situation onto the top. Yu Zhang again on a 0-2-0 score. Not a good Dragon Boy for today. Big struggle coming in from him, man. And as you rightly mentioned, that's not the kind of Yu Zhang you'd really want to see. That is not the lore accurate dragon which we are waiting for. That's entirely different. Now on the back of it, you don't really have the early advantage. And you don't have a proper marksman in the gold lane. If anything, you've got a Ruby. That kind of needs you to thrive onto that early game as well, which ain't really happening. It's going to be tough. Oh, the boss potential. Yeah, but it's fine. It's okay. No problems happening there at least. On the other side, Diversion down bottom. Harith could be in trouble. Out being caught in the open with a Purify. Saving his life instantly. But here's the thing, like, hey, they need to mark down Harith more because Toby, in thick of it, he is farming left, right, and center, just like the previous game. And even this time, if Shadow Esports leave him for a minute, he's gonna farm for the next game too, and he's gonna punch out the dragon alongside the Ruby in, and he's just gonna melt him down like a, hey, you're just gonna be my food, my meal, and just feed me. Wow, someone's hungry. I don't know. But again, the second turtle is up, and this time Shadow Esport is looking for the contest itself. But look at the zoning potential. Dark with the bomb. AOG with the real world manipulation on the other side now with the Yu Zhang's Black Dragon form. They want to try and get that turtle. A big pick off coming in. 3 being taken down on the other side as the turtle's taken up. Rarin falls as they all go in for the chase now. The Yu Zhang diving in a bit too deep as it's another one coming in for the Ruby. Massive performance though, but still. Trade-off on the other side. Something at least being brought out by YAMA Esports. That's such a massive win for Shadow. And guess what? It's not yet over. As again, the Khalid jumped in all the way with the Raging Sandstorm. They have the damage. And another one. Make it to a double for the Suyu. Tries to now run back to safety. This Mangekyu Sharingan user can see every single move on the other side. It definitely does, and look at that, how brilliantly escape. Not to mention the only sole member of the bloody sacrifice that dirty massacre happened onto the turtle pit was, Wily, and he just went there, snatch and slice his throat up, again come back, and with the slither of HP, gets another kill onto the Khalid itself. Right now, from the bottom, they are into the goal lead with 2.5k into the hands, making it to 300k. 3k, sorry, not 300k. 300k. The producer needed a pause to digest the fact of 300k gold. It just got slip out of my tongue, but hey, like, given the fact, like, how they bounced out the gold efficient with just one turtle fight. What actually happened was the presence of Ruby that turned down the whole team fight situation for Shadow Esports itself, and also the Black Dragon constantly looming over the threat for the EU. Like, it zoomed out onto the different part of the map,
making sure he is not over the team to provide the backline assistance, which mages usually do. And that what exactly brought the Shadow Esports into the goal lead, which they are right now. It was a bit of an overextension coming in at the purple buff there, right? Because Raran wanted to take the turtle while rest of the team kind of wanted to force out that retribution on the other side, and they overstayed their welcome. That eventually turned into a proper punish, right? Because then it was Shadow Esports who had the numbers advantage, and you rightfully mentioned the zone out coming in from the Yuzhong as well, pushing rest of the members back, along with the Ruby playing the cards right. They were able to quickly turn the tides of that battle. Now, here's the thing. That was probably a one-time thing now. Shadow Esports, they've got to repeat those things again. And now they're in a goal lead. They've got the possibility to dictate the momentum of this game and not really let YAMA Esports run away with that. So I think so in terms of the re-engage, Shadow Esports is really good. But they've got to be wary of that initial engage that's coming in from YAMA. That's true, but the big question is like, how are they going to deal with the split push coming in from the Toby? Like he's constantly looking for the farm. He's onto the power lane where the team, where Shadow Esport is. No, they're looking for the constant farming, and if he's able to keep engaged Ruby, it's a big situation. Like they need the Ruby into the team fight just to provide the defense or the front line or the frontal, tanking stuff for Ben 14. That's one of the big things out here. Yet again, a bit of an engage though. Suyu wanted to catch the last guy, but it's still a way to run back to safety as the Zaman force along with the real manipulation dropped in. Turtle fight on 4. And guess what? It's the Yuzhong up on top who's trying to zone everyone with the red tree landing in from Sasuke. He's going to run all the way back to safety with the raging sandstorm now. Moon! He's got the AOG to run away. Abyss easy falls. It's another win for Shadow Esports though. Not that big because they've lost 2 in the process. Again, the turtle for the Shadow Esport, but the team fight leading to the YAMA Esport again with the blue buff steel. Raren is looking for the opponent, but again the diversion play. Toby might be in some serious trouble over there. Yeah, it could have been a possible scenario, but it's fine. He's A-okay. The Harith running in with the Purify has always been a problem to deal with, and that's what's saving his life for now, at least. But the main question is, for how long is it going to go? How long is that Purify going to save you from these onslaughts? The Harith is on constant farming simulator in this game, just like the previous one, but they have the diversion play just in case if they want to go for a quick fight or quick lanes thing. But one member has always need to be there to just onto the far lane just to clear it out and stay for the Harith in case if he joins or go for the split push thing. That kind of leads to Shadow Esport onto the downfall. Like, hey, they need all 5 members to stick together because the composition they are holding on to, it's all on 5 members. Brutal fight, a frontal tier boxing type of thing. Hold on. A death bush. They want to cast the Khalid though, but he still is vigilant about it. And now they've got to run back. They can't really overstay here. If they do, not really want to face the rest of the wrath coming in from YAMA Esports. A good spot though, I'd have to say. Abyss, he was lucky he survived there. First lot of the game spawned right now, but both the teams are taking it pretty slow given the fact like, hey, the back and forth, the team fights are happening. They're respecting the each heroes and the draft. Looking at the itemization, pretty sure that Suyo is going to deal again a lot of damage with the Vortex and also the Sea Halberd is stacked up upon. Exactly. That's the big thing you've got to be careful about. The Vorax stacked upon the Sea Halberd, the HP based damage that comes in from the Sea Halberd is going to be problematic for you to deal with, specifically if you're Dark Abyss or even Rarin. But with the Holy Crystal now being brought in from Toby, I like the item now, Radiant Armor for Moon. So the Holy Crystal's not going to hit you like a truck. But I also want to see a Chastis Pauldron here now. I know a lot of people do not know it,
But the Justice Pauldron slows down the dashing speed of a Harith, which directly reduces the attack speed, right? So he doesn't really dash up that much. A big pull coming in, and in the back of it, Lemon instantly takes down the no RWM available though, but Lemon falls thanks to Toby, and the Appraiser's Wrath out in the midst of it all. It's default. Duck runs away, but not too far, as he will be taken down. The recall spam on his face. Shadow Esports take 4 for 1, and they're super happy with that trade. A 4 for 1 with the bottom lane tier 1 into the hands, making sure it's a green signal, a green go for the Lord into the hands. With the nick of a turn, Shadow Sport dictating this game into their hands alongside a 3k goal lead, maintaining the equal space. Given the fact that eventually it need to grow, but it is quite stable, the goal lead. The only good thing that happened for YAMA Esports there was the fact that Lemon fell in that fight. They didn't really want to risk with the retribution on the other side. That's why we've got to wait for every single one of them to hop back in. So we're back to square one, technically. But, oh, lovely pick off with the retribution. The Lord's been secured. Ben 14. It's going to be shut down this time on the Louis. Doesn't really have an option to survive as Moon now tries to run away. But the Radiant Armor finally acting up as Dark's been isolated on the other end. And with the Black Dragon form now, Walla needs to go back to safety. He plays! Oh my god! What a flicker from the man! Plays with the emotions of default and outplaying entire squad of Shadow Esports. And on the back of this survival, I think so they would be able to defend. They will be able to defend, given the fact that Toby do have the Zaman Force and the Ronin Dashes. It will be too easy for them to defend it out. But hey, the rest of the towers will be decimated from the side of Shadow Esport. Again, the diversion plays. We can see the Luo is already there, present, looking for a possible engage. And right now, Lemon is dealing a tremendous amount of damage with the Vorax and the Skype CL, but stacked upon him. Lord marching down, real world manipulation being popped out. And this could be the maybe last fight of here. But it's fine. There's only got every single one of them. Dark going a bit too far forward now, overextending a bit. This could be punishable, but with the Appraiser's Wrath out in the open, they should be able to take one. Default falls, make it the second one as well, as Dark is surviving along with Toby, following up with a double kill coming in. The diversion being used up just to survive, as Ben 14 is the only man left. The inhibitor falls up top, but now everything is going to be claimable for YAMA Esports. What actually went wrong for Shadow Esport? I don't think so they were able to look out for it. Like, they were mentally not prepared for the counter engage when Dark just suddenly, but again, wait a minute. The last member, Ben 14, he falls down as Raging Sandstorm alongside the Zaman Force, and the dashes from the Arid manages to stake him again. And look at the mid 2 tower, instantly chopped down away from YAMA Esport. Back to the square. What actually happened? The Lord hit the tower, and they were not actually prepared. The Shadow Esport, and that's when Dark with the Phobius bonking over the enemy head, and with the slap from the Fredrin, they were able to turn the tides. A beautiful, beautiful defense from YAMA Esports. Tough one coming in. But a defense indeed. But here's the thing. Now with the Divine Glaive made up, YAMA Esports, Obi is going to dash like crazy. And an early Divine Glaive as well coming in from Walla. So he is going to burst through all of those Radiant Armors. And the poke is going to be difficult to deal with. And I don't really like the triple damage item from Wink. I think so he should have gone and put 2. The third one seems like a bit too much there. But here's the thing. Considering their lack of damage, I think so that third damage item was also necessary. So there's 2 ways of looking at it right now though. Toby has got to run back to safety as they instantly spotted out the onslaught coming in from Shadow Esports. But now on the back of it, he could have been caught out in the open with the Royal Bull manipulation being dropped in. And right at the edge is where Wink stands.
There should be an I'm offended, but none of that is available. All of that used up now, and Moon is isolated with the AOG trying to run back to safety. It's Wink who's now taking the damage along with default as Dark first falls, and Wink will survive thanks to the extra bit of lifesteal that came in. 4 of them dangerously low, but all of them survive. It was just Dark alongside Raren who were just zoning all the members. Again, a diversion play. This might be the game of the lifetime. Shadow Esports were looking for someone force again. All the members are running for the life. Raren might be able to catch down the Lemon. He runs. Retribution being used. Again, a taunt with the slap. Toby takes the kill away. Big play yet again. YAMA Esports, and now Dark will be hopping in the fight. RWM on the face of everyone. He's still surviving. Voila, this is absolutely disastrous and it's ludicrous. Ben 14 shuts him down a bit. He's trying to zone the rest of them out as well, as with the Black Dragon farm right now available. They want to try and catch Toby. No Purifier, so he's got to be vigilant about this. Just tries to dash around as well, with Wing standing up. Now pulls in a couple of members. No anti-heal maybe, so that could be a problem. But he gets instantly bursted down as a bit easy on the other side. Tries to do the same thing, but the far lane is now pushing in. You've got to get someone back into the base, and with the diversion, the Soyu and Louis will join the Lord fight. Shadow Esports are going to secure this Lord thanks to their macro. A 2-for-1 with the Lord. Shadow Esports trying to gain the momentum they had, and I think this could be the final fight of this match, with the Lord, with the full team in their hand, marching down to the enemy base. All it comes is how YAMA Esports is gonna defend it one single time, or they're gonna go with an all-out. Massive Lord, and what a timing to get it. On the back of it now, having a look at the last few items. Sasuke, talk to me about it. Chloe with the Blood Wings, definitely the extra shield. I think she is going with the Winter Crown, given the fact that there is a lot amount of crowd control, but hey, the Lord is already on the top lane. Shadow Esports looking for the mid tier 2, but unable to get it. Right now, looking forward for more tiers into the grab. Lord being zoomed out via Harriet alongside the Fredrin. The team fight falls down. Mid tier 2 decimated. Looking forward the inhibitor in the mid diversion plays. But whether it's going to be on the bottom lane, again the RWM being popped up. Oh, Abyss, he lands in the Raging Sandstorm on 4, but it doesn't really have a proper support for them to be taken out. It's only Lemon who eventually falls, and now they want to try and make it a bit more. Dark missing it out, but still had the dash of the basic attacks, catches them, but it's still a 2v2 out there. Ben 14 should be able to survive out. Winter Crown comes in. That could be the outplay they needed as Dark finally falls, but it's default on the other side, facing the same fate, and guess what? The immortality of Raren now popped up, has bought enough time for the rest of the members to join in as Fang. With Don't Front Wolfgang is there, but cannot survive for longer. He goes all the way up top thanks to the diversion play, as it was Ben 14 to be taken out. But man, a 3-for-1 trade. YAMA Esports will take that every day. It might not be over. Moon. Gotta try and run back. Now this is the Justice Pauldron's massive slowdown on Toby with the AOG. Moon will be able to run back to safety. You know, in the whole team fight, it was Moon who landed the AOG quite literally too far again, but we'll be going back to that point again. But Raging Sandstorm catching down Ruby. RWM being popped out, and that is the goal line for Toby. Wink taken down there. That could be a bit of a problem out here now. You don't really have your disengage tool with the Ruby along with the re-engage, so all they can do is just stay in the back. Now this gives the Lord access to YAMA yet again. 6 more seconds. String Lantern by Toby. So now he's going to deal a lot more damage to Default as well as Gato. Someone who's being used, but there is the possibility of diversion. Ben 14, he's looking forward for a straight go. Black Dragon for
being used, but there is the third Lord already being secured. Lemon all the way on the top, looking for a possible split push. But there is the dark, just to make sure that hey, your plan is failed as long as I am here as the iron wall for Yama Esport. And into the previous team fight, a quick recap. Katokacha, as soon as Lemon falls down, Katokacha jumps back onto the back line. That was kind of a big blunder in my opinion, but he did manage to make or just keep busy three of the Yama Esport members while staying alive. That made Now, sure that hey, the rest of the Shadow Esport can take out the rest of the members. here's the thing. Since the far lane is in control of Shadow Esports, that wave is not going to crash in. That means the only inhib that could be the next target could be that bottom one. Now, since the waves were not stacked up, this has given enough time for Shadow to actually take this Lord. And guess what? Vala has been picked off instantly thanks to that flicker. I'm offended play coming in from Wink. And with that, Yama should fall back. Without the RWM, they cannot take the fights. A good defense from Shadow Esports. An inhibitor for a player, but again, the diversion plays. Oh, Kind of want to go and push their advance forward. Lemon busted down. And guess what? It is Toby who's just dashing around. Moon will have to run back, but catches no one with the AOG. Wanted to go back into the team as Dark will bonk on Ben 14. Nowhere to run, nowhere to hide, and nowhere to survive as default is the next target as this Black Dragon will be safe. At least for now, but not from the Appraiser's Wrath is where Wink finally stands low in that HP for the minions in mid. They want to end the game with the Salmon Force and they will do so. Yama Esports getting the second game and moving to championship point. a match point away, a game away for becoming the champions of MOBA Rising Star Season 3. And this game, it was kind of a close call for both the teams. 22-1 scoreboard, and there could be a lot of possible mistakes where Shadow Esport could capitalize it, but it all came down to the last team fight where unexpectedly they didn't anticipate the damage coming in from Toby, and they just jumped down. Lemon as the first, he just melts down like a paper, and as soon as he melts down, Moon is yet to follow, and that is the turning point for Shadow Esport downfall in the fight in the last team fight. Look at the one who dealt the maximum damage. Of course, it's going to be Toby. On that had a 28% there with the tower sieging as well. The Wishing Lantern added into the mix along with the boot after replacing the boots. That kind of made the difference too. Now, as I said, I did like the composition of both the teams. Ruby kind of needed to go in with those extra bit of items too, but once the last few items were made, you knew that Yama Esports will be the stronger ones in those fights. It came down to those micro and macro management, and Yama Esports eventually were the ones who came out on top with that. But ladies and gentlemen, now with the 2 games set aside, both of them being secured by Yama Esports, the second one not so easily. It is highly possible that we might possibly see a reverse sweep, and if you want to be a part of that action, make sure you stay tuned. Don't go anywhere as we will be back after this short break on the MOBA Rising Star Season 3. Brand new mode is coming to MLBB. Chaos Clash. Team up in trios, begin at level 3, and fight on a fresh map with no minions or turrets. During the preparation phase, grab chaos fragments to boost your power. As the match goes on, the Annihilation Tide emerges, pushing the action to the limit. Here's a closer look at how this new mode works. Chaos Clash is a multi-round 3 versus 3 mode. Wipe out the entire enemy team to win the round. Teams lose HP each time they are defeated. If a team's HP drops to 0, they're eliminated. Rounds continue until only one champion remains. When there's an odd number of teams, one team will sit out the round. After certain rounds, heroes automatically level up and earn gold. Use this time to buy equipment and boost your power. All full equipment except boots costs 2,000 gold. From round 11 onwards, teams earn bonus gold. Adapt your loadout and strategy to stay ahead.
At the start of each round, you will receive random chaos fragments that boost your power. You can also refresh fragments to re-roll their effects, with 2 refreshes per round. The game offers a wide variety of fragments, each with unique effects, so you can mix and match to create your own playstyle. For example, tank fragments make your hero tougher and deal damage back to attackers. Marksmen who pick range-enhancing fragments can safely deal damage from afar. And that's just the start! Countless other powerful fragments and combinations are ready for you to try. As rounds progress, the annihilation tide starts shrinking across the map. Heroes outside the tide take sustained damage. Master this mechanic, and it can swing the battle in your favor. For instance, heroes with knockback or displacement abilities can push enemies into the tide. Surprise your opponents and watch them struggle against the sustained damage. The new 3 vs 3 mode, Chaos Clash, is coming soon. With a variety of chaos fragments, every match brings a fresh experience. The shrinking zone adds fast-paced, thrilling action, and new map buffs further empower heroes. Exciting, innovative, and powerful new strategies await. Are you ready to try them all? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यहाँ पे एक और नए मैच के साथ। और आज जो है यहाँ पे फिनाले का स्टेज जो है वो यहाँ पे सजा है और इस ग्रैंड फिनाले पे सामने लड़ती हुई दिख रही है शैडो स्पोर्ट्स वर्सेस यामा Sun rises when I give the यामा word. स्पोर्ट्स 2 स्कोर्स अंकों से आगे हैं, लेकिन शैडो स्पोर्ट्स पीछे नहीं है। आगे भी टक्कर दी है आपको दो में। और देखा जाए तो ये मैच अभी चल रहा था, Experience the euphony of तड़कता मैच suffering. गया है यहाँ पे। ऑलमोस्ट शैडो स्पोर्ट्स जीते रह गई। एक गलती के कारण मैच जो है उनके हाथों से जा चुका। वहां पे हमने देखा जिस तरीके से उनके हाथों से जो मैच है वो जाता हुआ दिखा था, लेकिन इस मैच पे वापसी करने के लिए शैडो स्पोर्ट्स अपनी पूरी जी जान लगाना चाहेंगे। तब तक के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे मोबा राइजिंग स्टार सीजन 3 और आज इस मैच को कास्ट करते हुए मैं हूँ आपका कास्ट शिनरा और मेरे साथ मेरे अपने मित्र This land is our homeland, and it will soon be your burial ground. क्या हाल चाल है आपके और इस मैच को लेके कितने उत्सुक हैं आप? भाई काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं लिटरली, क्योंकि यामा जिस तरीके से अभी गेम प्ले दिखा रहा है उस तरीके का गेम प्ले अगर यहाँ पे भी देखने को मिले। लेकिन इसी के साथ साथ शिन्ना मैं भी कहना चाहूंगा कि शैडो स्पोर्ट काफी टक्कर दे रहे भाई। एक टाइम था ये सेकंड मैच में देख रहा था घर आके, लिटरली जो है भाई वो जीतने की कगार पे थे, लेकिन यामा पता नहीं कैसे ऑलवेज कमबैक करता है हारने की मौके से। वो चीज यहाँ पे देखने का मौका दिया जा रहा है, लेकिन शैडो स्पोर्ट्स को भी अब कम मत मानिएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे रेस्पेक्ट बैन पे खेलित को यहाँ पे बैन किया गया है, ग्रेंजर को यहाँ पे बैन किया गया है, जुशिन को गेम से बाहर फेंक दिया गया भाई लिटरली। तो जो मतलब मेटा हीरोज रेस्पेक्ट बैन और मेटा हीरोज को हमें यहाँ पे बैन करने का मौका दिया जा रहा है आसानी। I am the priestess of primal lightning, the hunter of all the evil gods. यहाँ पे एडिथ का आगमन होता हुआ जा रहा है और एडिथ आना चाहूंगा आपको जिस प्रकार से खेलते हैं यहाँ पे हाइपर एडिथ जाते हुए दिखते हैं हमको,
ज्यादातर यामा स्पोर्ट्स की तरफ से हमने देखा है काफी टाइम से जो है यहाँ पे काफी बार जो है एडिट हाइपर के तौर पे खेलना पसंद करती है, लेकिन फ्लेक्सिबल पिक है एडिट। एक आप देखिए उसको चाहे आप ईएक्सपी पे खिला दीजिए, चाहे उसको गोल्ड लेन पे खिला दीजिए, चाहे उसको एज अ रोमर भी खेल सकते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा फ्लेक्स पिक मैं यहाँ पे कहूंगा। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे हिल्डा भी आ गई है, तो लगता है कि यहाँ पे रोम पर ही जाएंगे, क्योंकि अगर एक्सपी पे जाएंगे तो उनका फुल पोटेंशियल आएगा नहीं, तो उनका जो फुल पोटेंशियल है वो रोम पे ही आएगा। और इस बार थोड़ा इन्वेट करने का जो है यहाँ पे प्रस्थान करने का प्रयास जरूर करना चाहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ देखी जाए वहां पे लापू लापू है, एक ऐसे फाइटर है लापू लापू जो सीधा घुस जाते हैं, और उसी के साथ देखिए यहाँ पे किमी का आगमन होगा। और अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ पे बात की जाए, देखिए किमी भी आ चुकी है, उसके साथ साथ सिंगल टारगेट बात करें तो यहाँ पे किलिया का भी आगमन हो चुका है। यहाँ पे जय भाई मेरे को ये जो यहाँ पे, और कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि दूसरी साइड यहाँ पे फ्रांस का आगमन होगा। फ्रांस समय पता ही है कि यहाँ पे योगले जब खेलते हैं मैच भैया, हर बार फ्रांस के तौर पे जब भी खेलते हैं एमवीपी लेके जाते हैं, बहुत ही बेहतरीन फ्रांस खेलते हैं। और यहाँ पे फ्रांस के साथ दिक्कत ये हो जाती है कि फ्रांस जो है यहाँ पे पूरी तरीके से एनिमी टीम्स का जो है रिसोर्सेज वेस्ट कराने में हेल्प करते हैं, तो उनका जो अल्टीमेट वहां पे रहेगा वो बहुत ही यहाँ पे एक तरीके से क्रूशियल पार्ट निभाएगा यहाँ पे, और देखना पड़ेगा इस प्रकार से यहाँ पे इस फ्रांस का इस्तेमाल होता है जय भाई। जी बिल्कुल शिंद्रा भाई, इसी के साथ साथ यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा कि भाई आज ग्रैंड फाइनल है, ग्रैंड फाइनल चल रहा है भाई, लोग तुम लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब नहीं करते तो शेयर करो, लोगों को दोस्तों को बुलाओ। फाइनल मस्त मैच होने वाला है, यामा डोमिनेट कर रहा है, बहुत सारे यामा के फैंस हो यहाँ पे, एक दूसरे को दूसरे को बुलाओ और यहाँ पे मैच पे जो है एंजॉय करो। इसके साथ साथ शिंद्रा 5वां बैन पे जाने वाला है हम लोग शैडो स्पोर्ट्स की तरफ से, तो यहाँ पे फाइनल बैन होने वाला है। ये देखना रहेगा कि सुयू जो है पिछले मैच में भी काफी डोमिनेट करते हैं, यहाँ पे सुयू को बैन किया गया है, गुनीवीरे को भी बैन कर दिया गया है, सीसी तो ऑलमोस्ट 90% टाइम हमें बैन लिस्ट में देखने का मौका दिया जाता है, वो भी बैन देखने अभी दो पीक और एक बैन वो देखने का मौका हमें यहाँ पे दिया जा रहा है शिंद्रा। तो आई थिंक यहाँ पे हैरिथ को बैन कर दिया गया शिंद्रा यहाँ पे। जी बिल्कुल, हैरिथ का जो डैमेज था एंड फाइट में जिस तरीके से उन्होंने डैमेज दिया वहां पे, तो बहुत ज्यादा चुभा था हैरिथ का डैमेज। कहीं ना कहीं पे उनका जो डैश था, क्रोनो डैश के साथ जो डैमेज आ रहा था वो कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहा था। और देखना यहाँ पे बात रही कि अभी देखिए रोमर पिक नहीं हुआ है, तो रोमर देखना पड़ेगा किसी की तरफ जाना चाहेंगे, क्योंकि अगर बात की जाए फ्रांस की तो मिड लेन पे भी जा सकते हैं। फ्लेक्सिबल पिक बहुत चूज कर रही है यहाँ पे यामा स्पोर्ट्स की बात करें। दूसरी तरफ देखा जाए तो शैडो स्पोर्ट्स की तरफ से रोमर भले ही पिक हो गया है, लेकिन हाइपर का भी आगमन होना बाकी है, और यहाँ पे हाइपर देखना पड़ेगा क्या लेना पड़ेगा। लेकिन दूसरी साइड से अगर देखा जाए तो रूबी का आगमन हो चुका है, और देखिए रूबी का आगमन जब होता है ना यहाँ पे, तो रूबी के साथ जब आई एम ऑफेंडेड पड़ता है यहाँ पे, तो बहुत ही बेहतरीन गेम पलटी। आई एम ऑफेंडेड अगर पड़ा, 4 बंदे आपने अगर पकड़े, तो यार वहां पे जो है गेम खत्म होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और बात करें इस संभावना की, असंभव को संभव बनाने की, तो वो देखना पड़ेगा कि आखिरी पिक क्या आएगा, और शैडो स्पोर्ट्स इस पिक का क्या जवाब देना चाहेंगे। यहाँ पे कौन हीरो है जो यहाँ पे रूबी के अगेंस्ट लेना चाहेंगे, देखते हैं। यहाँ पे देखिए सामने लापू लापू जरूर रहेंगे टैंक को सुकअप करने के लिए, पीछे से डैमेज देने के लिए केवल और केवल यहाँ पे किमी है जो अच्छा खासा यहाँ पे सस्टेन डैमेज दे पाएगी, लगातार जो है डैमेज करते हुए दे पाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे उनको धाराशायी किया गया किमी को, तो उनकी टीम से खेलने के लिए कोई रहेगा नहीं। और देखिए यहाँ पे अच्छा खासा फ्रंट, देखिए बहुत ही अच्छा लाइनअप के साथ जा रहे हैं शैडो स्पोर्ट्स। शैडो स्पोर्ट्स इस समय जा रहे हैं प्रोटेक्ट दी कैरी करके, तो यहाँ पे ये जो लाइनअप है पूरी तरीके से किमी को प्रोटेक्ट करते हुए चलेगा, और किमी एकमात्र ऐसे हीरो रहेंगे जो कि यहाँ पे जो है डैमेज पूरी तरीके से प्रदान करते हुए अपनी टीम के लिए वो रहेंगे। जी बिल्कुल शिंद्रा, इसके साथ साथ यहाँ पे एक हीरो वाईएसएस जो है अभी भी ओपन है, मुझे नहीं पता लेना पसंद करेंगे कि नहीं, लेकिन यामा को अगर मौका मिलता है वाईएसएस को छोड़ते नहीं है, वाईएसएस को पिक करते हैं और बहुत ज्यादा फार्मिंग फोकस करते हैं अर्ली टू मिड गेम तक, तो यहाँ पे देखने का मौका दिया जाएगा। इसके साथ साथ शैडो स्पोर्ट्स इस बार पूरा सीरियस होकर खेल रहे हैं, क्योंकि ये उनके पास आखिरी मौका है। 2-0 स्कोर पे चल रहे यामा स्पोर्ट्स यहाँ पे गेम डोमिनेट कर रहे हैं, हारते हुए जो जीत के मैच को ले जा रहे हैं बाजीगर की तरह, वो चीज हमें देखने को मौका दिया जा रहा है। यामा यहाँ पे काफी सोच में यहाँ पे टेरिंजिला को लिया गया है, तो एडिथ हाइपर जाने वाले, जितना मुझे लगता है यहाँ पे हमारे व्यूअर्स जो है, हमारे दर्शक जो है, उन्होंने भी ये किया था कि एडिथ हाइपर आजकल बहुत जो है प्रचलन में है, राइट। तो यहाँ पे एडिथ को जो है शायद हाइपर के रूप में देखा जा सकता है शिंद्रा। जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि हाइपर से एडिथ हाइपर खेलना पसंद करते हैं। यामा स्पोर्ट्स की टीम में अगर बात करें तो उनकी तरफ से जो है हमने कई बार देखा भी है,
तो मेरे को पता ही था कि ये जो है यहाँ पे एडेथ हाइपर चाहने वाले हैं। और उसी के साथ अभी देखिए लाइनअप पूरा देखिए ब्रॉल लाइनअप यहाँ पे बनता हुआ जा रहा है और इस ब्रॉल फाइट पे देखना पड़ेगा कौन विन करता है, लेकिन कहीं ना कहीं माइक्रो जो है यहाँ पे वो बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा भूमिका कौन सी निभाएगा, क्योंकि अगर डेंजरस ग्रास निकला तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन यहाँ पे एक्सपैंडिंग रिवर आया है, बच गए। डेंजरस ग्रास होता तो हिल्डा के पास अच्छा खासा मौका होता वहां पे कैम्प करने का, एम्बुश करने का। तो इसलिए यहाँ पे एक्सपैंडिंग रिवर आया है तो मोबिलिटी बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलेगी जंगल एरियाज की साइड पे जो है यहाँ पे अब ज्यादा मोबिलिटी देखने को मिलेगी। हो सकता है कि यहाँ कहीं ना कहीं जो है ब्रॉल होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, लेकिन मेरे को ज्यादा लगता है जय भाई जो फाइट है, जो पहला जो खिताब है वो मिडिल लेन की तरफ ही खुलने वाला है। जी अर्ली गेम पे मिड लेन पे फोकस किया जाएगा। इसके साथ साथ हम लोग आ चुके लैंड ऑफ डॉन में। यहाँ पे 2-0 स्कोर्स पे यामा जो है आगे चल रहे हैं। यहाँ पे घमासान युद्ध जो है वो होने वाला है। इसके साथ साथ देखिए अच्छा खासा डैमेज हिल्डा को प्रदान किया जा रहा है। अर्ली गेम से ही डैमेज जो शेडो स्पोर्ट्स प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ साथ एडिस जो आपने फोकस करे जंगल प्रायोरिटाइज किया जा रहा है। यहाँ पे राइट नाउ अगर बॉट लेन की बात करें तो बॉट लेन पे जो है इल्समार्डर को पोक किया जा रहा है, लेकिन मिड लेन की बात करें तो यहाँ पे शेडो स्पोर्ट्स जो है लिटरली शेडो में रखने की कोशिश कर रही है यामा स्पोर्ट्स को। और टॉप लेन पे लापू लापू जो आई थिंक बैकअप के लिए पे घुमा जा रहा है। तो भाई मिड लेन पे अगर फाइट होता भी है, लेकिन टर्टल फाइट के टाइम पे एक्सपी लेन पे हम लोग एक गैंग उम्मीद कर सकते हैं। हिल्डा फिर से यहाँ पे आ चुका अपना डैमेज दे रहे, बहुत ही कम एचपी कर दिए किमी की, लेकिन किमी यहाँ पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। फर्स्ट ब्लड जो है भाई यहाँ पे ले लिया गया रूबी के द्वारा। भाई यामा स्टार्टिंग से ही जो है ऑन पॉइंट चल रही है गेम पे। ये बिल्कुल यामा का अर्ली गेम देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है और हमने देखा भी है कई बार खुद को उन्होंने साबित करते हुए जाएंगे, लेकिन शैडो स्पोर्ट्स वो भी कम नहीं है। देखिए एक ही किल गया है अभी और उसकी भरपाई अभी जीत गेम में देखिए हो जाएगी। ज्यादा फार्म हुआ नहीं है डिफरेंस। जब तक 2-3 बंदे ढेरा यहाँ पे नहीं जमाएंगे, जब तक धाराशाही नहीं होंगे और वहां तक देखिए थोड़ा मौका रहता है। और यहाँ पे पोक की बात करें तो किमी यहाँ पे डैमेज देने का प्रयास करेंगी और यहाँ पे जो देखिए प्रयास पूरा ये किया जाएगा कि किमी को किसी तरह से सेव किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी सबसे बड़ी दिक्कत जो है वहां पे एडिट बनेंगे सामने, क्योंकि एडिट का देखिए डैमेज पूरी तरीके से सुकअप करते हैं और जब उनका अपने अल्टीमेट फॉर्म में आएंगे वहां पे तो फिर जो डैमेज सुकअप किया है पूरा फिर जो है अल्टीमेट के द्वारा डैमेज देते हुए निकालेंगे भी। चलिए यहाँ पे देखिए जोन मिनियंस लिए जा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अब मिनियंस लेने के बाद टटल आएगा तो लेवल 4 पे रोटेट करने का प्रयास जरूर किया जाएगा। लेकिन व्यूले के ऊपर हमला होता हुआ दिखेगा, पीछे से बैकअप आता हुआ एवरेस्ट की तरफ से 3 बंदे चढ़ेंगे मिडिल लेन की तरफ, उछाला जाएगा स्टन का प्रयोग, उसी के साथ व्यूले करेंगे मूंगशाही और वहां पे पीछे की तरफ फ्लिकर मारते हुए जाएंगे अंदर की साइड। लेकिन यहाँ पे बैंड 14 के द्वारा इनको दिया गया मृत्यु का दंड। उसके साथ अभी भी फाइट खत्म नहीं हुए, अंदर जा चुके हैं लापू लापू डैमेज देने का प्रयास रूबी के तौर पे, लेकिन रूबी बचते हुए निकलेंगी और उसी के साथ पूरा डैमेज सुकअप करते हुए लेमन अकेले बचेंगे, लेकिन दो भी उनको देंगे यहाँ मृत्यु के द्वार। पीछे से एस्मराल्डा आती हुई के जाएंगे सीधा मृत्यु के द्वार पे और 3 बंदे अभी भी बचे रहेंगे, लेकिन एचपी कम होने के कारण उनको पीछे हटना पड़ेगा। और ये अभी जो पारी है टर्टल की तरफ जाना चाहती है, परंतु आपकी टीम में अभी देखिए है नहीं, अभी आपके पास टीम आ जाएगा। अभी आप यहाँ पे खेल के हटे हैं पूरी टीम से, देखिए अभी आने का समय रहेगा तो देखना पड़ेगा ये टर्टल कौन लेके जाएगा, क्योंकि टर्टल यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज भी रहेगा। साथ के साथ अभी पूरी तरीके से वेट किया जा रहा है। देखिए ब्लू बफ पे वहां पे गए हैं, अभी आए नहीं है टर्टल की तरफ, ब्लू बफ लेना चाहते हैं पहले, लेकिन यहाँ पे एस्मराल्डा मार्क लगाती हुई जाएगी और शील्ड का पूरी तरीके से उपयोग करते हुए यहाँ पे डैमेज दिया जाएगा। पीछे से यहाँ पे एवस्टीजी को अकेले पकड़ा जाएगा कम एचपी में भागते हुए, लेकिन उनको मृत्यु का दंड द्वारा दिया जाएगा। बैंड 14 के द्वारा यहाँ पे उनको जो है यहाँ पे मृत्यु का दंड दिया गया, लेकिन पीछे से पकड़ने का प्रयास किया गया। 3 बंदे यहाँ पे रहेंगे, लेकिन बढ़िया पारी यहाँ पे चलती हुई दिख रही है। 4-3 का स्कोर हो चुका है और जैसे कि मैं कह रहा था कि पहला किल देखिए ज्यादा बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। शैडो स्पोर्ट्स जो है उनको पता है किस तरीके से वापसी करनी है और ये वापसी इन्होंने अभी कर ली है और इस टेम्पो को इन्होंने सेट कर दिया। इस टेम्पो को लेके इनको चलना पड़ेगा। जय भाई। जी बिल्कुल, यहाँ पे टेम्पो लेके चल रहे। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा काफी अच्छा दोनों जो स्पोर्ट्समैनशिप होता है ना, एक फाइट होता है, एक टक्कर होता है, वो यहाँ पे दोनों टीम की तरफ से देखने को मौका दिया जा रहा है सानी। और एक बात सॉरी शिंडा, मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि मुझे आपके इस मैच में ये फेमस जो लाइन था कि एमएम आप आगे मत जाइए वरना, वो फेमस लाइन आपकी मुझसे आज सुनना है इस फाइन ग्रैंड फिनाले में, क्योंकि वो काफी ज्यादा रोमांचक लाइन होता है। इसकी उम्मीद करेंगे। इसके साथ साथ देखिए अभी पोकबाजी चल रहा है, यहाँ पे फाइट चल रही है, यहाँ पे फाइट तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे टारगेट हो गया न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव टारगेट जो है उस पे भी फोकस किया जा रहा है। टॉप लेन पे थोड़ा सा रूबी प्रेशर बना है, टीम लेन पे आ रहा है। इसके साथ एक फाइट शुरू हो चुका है फ्लिकर की यूज करते हुए जो है यहाँ पे हमारे किडनैपर जो है
वो पीछे की तरफ वापस आएंगे, तो उनका जो एक फ्लिकर स्किल जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसको यूज कराया गया है यामा की तरफ से। इसके साथ साथ फाइट के अंदर फाइट होगा, यहाँ पे किमी को मौत दिया जा सकता है, किडनैप कर चुके हैं, लेकिन किडनैप करने के बाद भी यहाँ पे कुछ कर नहीं पाएंगे, बहुत कम एचपी पीछे की तरफ व्यवस्थित जाएंगे। एक टाइम फाइट करना फिर से जा चुका है, एक फाइट फिर से चल चुका है, यहाँ पे एक कटर किल और लिया जाएगा, यहाँ पे किडनैपर को जो है मार दिया, डबल किल लिया गया एडिट की तरफ से। रिकॉल स्पैम जो शुरू हो चुका है इस बार ऑन पॉइंट गेमिंग पे, यामा का रिकॉल और साथ ही साथ जो यहाँ पे जो जिस तरीके से किडनैपर को भी उड़ा के जो यहाँ पे लेके गया करिया को, जो उनको भी मारा गया है, तो ये गेम प्ले पे गोल डिफरेंस जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, यहाँ पे 1000 का आसपास का गोल डिफरेंस हुआ हमें देखने को मौका दे रहा है। इसके साथ साथ यामा जो है डोमिनेट फिर से गेम को शुरू कर दिया करना। जी बिल्कुल, देखिए वियोले भाई, वियोले इनको अगर आप धाराशाही नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी, लेकिन यहाँ पे एबीएसटीजी दिक्कत देंगे किमी को और उसी के साथ उनको भेजा जाएगा मृत्युदंड के द्वार पे। और इस समय यामा छुआरे खिलाते हुए दिखेंगी, क्योंकि पूरी टीम यहाँ पे धाराशाही होती हुई जाती हुई एक के बाद एक धाराशाही हो चुकी है और सीधा उनको भेजा जाएगा रिकॉन्स्पी की तरफ। उसी के साथ यहाँ पे उनके ब्लू की तरफ लिया जाएगा री और होता हुआ दिखेगा, लेकिन शैडो स्पोर्ट्स अभी हल्की सी पीछे हटती हुई दिखेगी। लेकिन देखना पड़ेगा ये शैडो स्पोर्ट्स यहाँ से वापसी करना चाहेंगे या नहीं, क्योंकि देखिए उनके पास पोटेंशियल है और ये पोटेंशियल किस तरह से निकलेगा वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि डैमेज देने का प्रयास किया जाएगा किमी के द्वारा। अल्टीमेट इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, लेकिन रारेन खेल निकालते हुए निकलेंगे और ये वाले का अल्टीमेट आता हुआ दिखेगा। देखिए यही अल्टीमेट की बात कर रहा था मैं, यहाँ पे पूरे रिसोर्सेज आपके वेस्ट करवा देते हैं, लेकिन रूबी यहाँ पे रिसोर्सेज वेस्ट कराए ना कराए, लेकिन पूरी तरीके से हील होती हुई जाएंगी, पीछे से डैमेज देते हुए जरूर जाएंगे। बैन 14 पूरा डैमेज आता हुआ, लापो लापो एक इनिशियल स्किल यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए शट डाउन दिया जाएगा टोबी को और इसी के साथ शैडो स्पोर्ट्स फिर दोबारा से वापसी की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है हमको। वो रिकॉल का यहाँ पे जो एग्रेशन था वो उसका जवाब देते हुए शैडो स्पोर्ट्स वापसी करती हुई गेम की तरफ वापस आती हुई 7-10 का स्कोर होता हुआ जाएगा, लेकिन जो गोल्ड लीड थी वो अब कम हो चुकी है, सिर्फ 1K का फार्म डिफरेंस आ चुका है और इस गोल्ड लीड को और भी ज्यादा एक फाइट के द्वारा यहाँ पे खत्म किया जा सकता है। जी बिल्कुल, इसी के साथ साथ यहाँ पे देखिए जो हमें एक चीज देखने की मौका दिया जाता है ना कि टर्रेट पुश, जहाँ पे यामा को मौका मिला नहीं वहीं पे टर्रेट को खा जाते हैं, वो चीज हमें शैडो स्पोर्ट्स की तरफ से देखने को मिल जाती है। लापू लापू दे आप एक चीज फॉलो किया, पिछले बार भी जब वाइप आउट होने की संभावना आई थी तब भी लापू लापू ऊपर फोकस थे, अब बॉट लेन पे फोकस किए, उन्होंने बॉट लेन का टारगेट तोड़ा। तो यहाँ पे हमें रिप्ले देखने को मिल रहा है, लेकिन वो रिवर्स होने वाला रिप्ले देखने का मौका दिया जा रहा है भाई, कि यहाँ पे टारगेट फोकस अभी ओरिएंटेड जो है वो यहाँ पे शैडो स्पोर्ट्स कर रहे हैं और यामा यहाँ पे डिफेंड कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक फाइट जो शुरू हो चुका है, काफी ज्यादा डैमेज दे रहे हैं, अल्टीमेट फार्मिस का यूज हो चुका है, लेकिन यहाँ पे शायद फंस सकते हैं, क्योंकि किमी को अगर मार्क किया जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, लेकिन किमी बहुत ही ज्यादा सेफ गेम प्ले कर रहा है। यहाँ पे फार्मिस का पास अल्टीमेट, लेकिन यहाँ पे फार्मिस जो है मौत देंगे, यहाँ पे फ्रेडरिन को गेम से बाहर निकाल दिया जाएगा। यहाँ पे फ्लिकर का यूज हो चुका है, लापुला पुनिशिंग हो गई, लेकिन इसके साथ शट डाउन दिया जाएगा। टीम बहुत अच्छा खासा गेम प्ले दिखाते हैं, लेकिन उनको मौका बिल्कुल ही नहीं दिया गया। यहाँ पे खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं बैक कॉर्नर पे जो है हमारा खेलिया, लेकिन एचपी कम होने की वजह से उनको फिर से वापस जाना पड़ेगा। टीम फाइट फिर से हमें देखने को मिला, एचपी बहुत ही कम है यहाँ पे, शायद स्टार्ट के अंदर एग्रेसिव गेम प्ले देखने को मौका दिया जाएगा। शिंदा जो आप कहते हैं हमेशा यहाँ पे एक और की लापो को ले लिया जाएगा। यहाँ पे फाइनल जो है आसमाड़ा भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनको भागने की मौका शायद हाँ मिल तो गया, लेकिन इस टीम फाइट में जो है ज्यादा एडवांटेज जो है हमारे स्पोर्ट्स को मिला है। जी बिल्कुल, सामने है टावर के अंदर घुस के मारा था, लेकिन किडनैप करके लेके जाने का प्रयास, लेकिन फिर से वो वाले वहां पे रहेंगे और इसके साथ अल्टीमेट का प्रदान करते हुए अपनी टीम को बचाने का प्रयास करेंगे, लेकिन रारे ने यहाँ पे डबल खेल झोली में भरते हुए लेके जाएंगे। और देखिए यही बात मैं कह रहा था, इनके हाथ में अगर प्रॉमिस दे दिया तो फिर दिक्कत की बात रहती है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे खेलते हैं और इसके साथ डैमेज देते हुए देखेंगे हमको। रारे ने अंदर की साइड जाते हुए, टावर अभी भी खड़ा हुआ है वहाँ पे, अननेसेसरी फाइट होती हुई दिखेगी हमको, दिक्कत हो सकती है, बच के निकलना पड़ेगा। एबीएसटीजी बहुत ही कम एचपी पे निकलेंगे, पीछे से आते हुए यहाँ पे डैमेज देंगे। फेडरेन अल्टीमेट का जाएगा, बहुत ही कम एचपी पे एबीएसटीजी को जीवन दान हुआ और पीछे हटेंगे, लेकिन लापू यहाँ पे आते हुए मेक प्ले करते हुए अपनी टीम के लिए और अपनी टीम के लिए एक बाजी यहाँ पे लगाने का प्रयास करते हुए देखेंगे हमको। और यहाँ पे देखना पड़ेगा, फाइट अभी भी खत्म नहीं हुई है, फाइट खत्म नहीं होगी तो यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो शैडो स्पोर्ट्स फिर दोबारा से एक और गलत फाइट यहाँ पे यामा स्पोर्ट्स की तरफ से आया था, उसका फायदा यहाँ पे उठाया शैडो स्पोर्ट्स ने, लेकिन यहाँ पे दिक्कत की बात, एक और खेल अपने नाम पे भरेंगे विंक। चलिए एक बंदे रहेंगे, वियोले वहां पे अकेले खड़े हैं, उनके ऊपर दिक्कत हो सकती है, अल्टीमेट का इस्तेमाल करते हुए खुद को बचाएंगे, लेकिन यहाँ पे जाएंगे को लेते हुए, बहुत ही कम एचपी पे लेके जाते हुए, लेकिन वो लॉर्ड लेमन अपने हाथों से नहीं जाने देंगे और वो लॉर्ड जो है वो जरूर हासिल किया है, लेकिन उनको बच के निकलना पड़ेगा क्योंकि उनके पीछे लग चुकी है यामा स्पोर्ट्स, लेकिन वो भी पीछे हट चुके हैं अभी।
ठीक है, दोनों ही तरफ से देखा जाए तो फाइट बड़ी अच्छी तरीके से चल रही थी। किल जाने दिया, एस्मेराल्डा खुद कुर्बान हो गई, लेकिन वो जो ऑब्जेक्टिव था यहाँ पे लॉर्ड का वो नहीं जाने दिया। वो इंपॉर्टेंट रहता है। आप किल आप दे दीजिए, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है आपका वो आपके हाथ में होना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, शिनराइज के साथ बहुत फनी मोमेंट था। हिल्दा का, हिल्दा बार बार पीछे की तरफ जाते हैं, कम लाइफ लेके आते थे, फाइट शुरू होता था, फिर से उनको भागने की था, वो बहुत अच्छा। इसके साथ साथ केलियन यहाँ पे किडनैप करने की कोशिश किया, लेकिन किडनैप करके पूरा टीम को खतरे में डाल सकते हैं। यहाँ पे कॉन्सेल का यूज किया गया, पीछे की तरफ वापस जाएंगे। यहाँ पे अगर फाइट लेते तो यामा स्पोर्ट बहुत ही ज्यादा डोमिनेट करते, क्योंकि केलिया ने सिर्फ किडनैप ही नहीं किया, साथ ही साथ उनकी जो यामा के पूरे टीम को अपने पास बुला के लेके आ गए थे। इसके साथ यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा गेम प्ले में जो है वो उसके वॉइड की तरफ से देखने को मिला। उन्होंने लॉर्ड तो नहीं ले पाया, लेकिन डबल किल लिया लॉर्ड के सहारे, वो भी काफी एक्सट्रीम गेम प्ले हमें जो देखने को मिला है। तो उन्होंने हार नहीं मानी, जबकि वहां पे एक डेथ हो चुका था, फिर भी वो जो कोशिश करके गए वहां पे लॉर्ड की स्टील करने की कोशिश की। इंस्टेड 2-2 किल मिला, ताकि इसलिए लॉर्ड जो है डिफेंड हो पाया, क्योंकि यहाँ पे शैडो स्पोर्ट्स के पास जो लॉर्ड नीतीश के साथ एक फाइट हमें देखने का मौका दिया जा रहा है। के लिए यहाँ पे उछाल उछाल के मार रहे, फ्रेमिस का अल्टीमेट यूज हो चुका है। फ्रेमिस के पास अल्टीमेट हो तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। इसके साथ यहाँ पे किमी को जो गेम से बाहर निकाला गया, किमी को मौका बिल्कुल ही नहीं दिया गया, तो इसी ये सबसे बड़ा गलती था। यहाँ पे दूसरा किल हमें देखने को मिला, टर्रेट के अंदर फाइट चल रहा है, यहाँ पे फंस चुके हैं फेडरिन, लेकिन फेडरिन जो मरने से पहले जो यहाँ पे लिटरली किल लेके वापस जाएंगे। फेडरिन के जाएंगे, यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा गेम प्ले लेमन स्पोर्ट्स जो है यहाँ पे शायद थोड़ा सा जो खलबली मचने वाला है, क्योंकि अभी उनको पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, वरना उनको बहुत दे के जो है लिटरली हमें वाइप आउट की संभावना भी देखने को मौका दिया जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन पीछे से योले आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे बिस्टीजी मार्क करेंगे 11 के ऊपर, और उनका यहाँ पे शाही कर दिया गया उनको। यहाँ पे अच्छा खासा डैमेज आता हुआ है, लेकिन यहाँ पे एस्मेराल्डा हील करने के प्रयास में रहेंगी। वियोले फिर दोबारा अल्टीमेट का इस्तेमाल करके बचाएंगे अपने टीममेट को, लेकिन पीछे से बिस्टीजी आते हुए वहां पे अपनी टीम के लिए, और इसके साथ एक और धाराशाही यहाँ पे होने का चांसेस रहेगा, देखना पे रुकते हैं या नहीं। और इसके साथ बैन 14 करेंगे, वियोले का अंतिम संस्कार जाएगा यहाँ पे मृत्युदंड के द्वार पे। और एक बार फिर से जो फाइट है लंबी चलने के कारण यहाँ पे एक और फाइट का खमियाजा भुगतना पड़ा। देखिए फाइट जितनी भी हो जाए, लेकिन बात करें अगर टरेट्स की, तो टरेट अभी भी पुश नहीं हुए हैं, टरेट अभी भी खड़े हुए हैं। यामा स्पोर्ट्स के सिर्फ बॉटम लेन जो है वो पुश हुआ है, होली शील्ड अभी खड़ी है, बिट का टावर अभी भी खड़ा है। और बात करें शैडो स्पोर्ट्स की, तो उनके जो टावर है वो कहीं ना कहीं थोड़े से कम हो चुके हैं, और इसी के साथ ये जो टावर है कहीं ना कहीं इनको जो है दिक्कत देंगे, क्योंकि लेन अगर जो ये मेंटेन करके नहीं चले हैं यहाँ पे, तो दिक्कत का सामना इनको जो है जय भाई करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, इसके साथ साथ हमारे लॉर्ड जो है शिंडा वो आ चुके हैं। लॉर्ड यहाँ पे काफी ज्यादा फोकस होने वाले दोनों टीम के लिए इंपॉर्टेंट वाला है। यहाँ पे शैडो स्पोर्ट्स को अगर लॉर्ड मिलता है तो काफी ज्यादा बेहतरीन गेम पे शैडो स्पोर्ट्स की तरफ से देखने को मिलेगा, क्योंकि उनको मौका मिलेगा टारगेट पुश करने का। यहाँ पे राइट नाउ सिर्फ टीम फाइट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक और खलबली हमें देखने को मौका दिया जा रहा है, जो है फेडरिन पे कंटिन्यूअसली जो 11 पे बार किया जा रहा है। यहाँ पे फेडरिन का अल्टीमेट यूज हो चुका है, लेकिन उसके बाद काफी ज्यादा दिक्कत में आ सकता है, एचपी बहुत ही कम है। यामा स्पोर्ट्स का इसका बदला है, तो टर्टिस यहाँ पे केलिया को बाहर निकालेंगे। यहाँ पे डबल किल लेके किमी को गेम से बाहर निकलेंगे। बहुत ही लाप यहाँ पे गेम प्ले दिखा सकते हैं, अच्छा खासा लापू लाप की डैमेज आउटपुट अगर निकलता है तो अच्छा खासा जाता है, लेकिन यहाँ पे वो ज्यादा आगे चले गया, तो यहाँ पर डबल किल लापू लाप को मिलेगा। शिंडा आपका डायलॉग जो है बहुत ही ज्यादा याद आ रहा है, बोलने की दिल कर रहा है, लेकिन वो डायलॉग आप ही बोल सकते हो, तो इसके लिए मैं आपके लिए वेट जरूर करूंगा। अभी लापू लापू थोड़ा बहुत पोक करने की कोशिश करेंगे, वो जो है पकड़ने की कोशिश करेंगे, ताकि यहाँ पे जो है लॉर्ड फाइट जो वो ना सके। फेरामिस का एचपी बहुत ही ज्यादा कम है, वो पीछे की तरफ ट्रेड के पीछे भागेंगे, लेकिन एस्मार्ट उनका पीछा कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। वो फेरामिस अगर अंदर की ट्रेड की तरफ जाते तो शायद बच जाते, लेकिन उन्होंने फोकस नहीं किया, आगे की तरफ आने की कोशिश की। एस्मार्ट अपने शील्ड के द्वारा जो है लिटरली जो है यहाँ पे फेरामिस को गेम से बाहर निकाला, लेकिन फेरामिस बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। हमारे स्पोर्ट्स की टीम पर बहुत ही जल्दी वापस आने वाले हैं। यहाँ पे एस्मार्ट जो एब्सोल्युटली वो जोनिंग कर रहे हैं, जोनिंग करके ये दिखा रहे हैं कि लॉर्ड अभी तक गया नहीं है, तुम लोग आ सकते हो लॉर्ड लेने के लिए। जी बिल्कुल, लॉर्ड लेने के लिए आ सकते हैं, लेकिन देखिए लेन्स का प्रेशर अभी भी कम नहीं हुआ है। लेन्स का प्रेशर ऑलरेडी बन चुका है। यहाँ पे बिस्टीजी यहाँ पे रोकना चाहते हैं, परंतु 4 बंदे उनके ऊपर चढ़ेंगे, पीछे से बैकअप जरूर आएगा। टोबी वहां पे आ चुके हैं, लेकिन वो होंगे लेट, क्योंकि बैन 14 देंगे यहाँ पे मृत्यु का दंड। और इसी के साथ ये लाइन में कहना चाहूंगा, हिल्डा ज्यादा आगे मत जाइए, नहीं आपको जो यहाँ पे पेल दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा आप किसको पेला जाएगा, क्योंकि पीछे से एस्मेराल्डा आ चुकी है, अपनी टीम आते हुए बंदों के बीच में लग चुकी है। डैमेज का प्रयोग जरूर किया जाएगा, लापू लाप जाएंगे अपने अल्टीमेट का इस्तेमाल करते हुए, ब्रेव फाइटर फोर्स का इस्तेमाल करते हुए जाएंगे अल्टीमेट, और इसके साथ यहाँ पे स्टन देने का प्रयास जरूर किया जाएगा, लेकिन बैन 14 डैमेज देते हुए लगातार लॉर्ड लेने का प्रयास, लेकिन रारेन यहाँ पे सिक्योर करेंगे अपनी टीम के लिए लॉर्ड। और ये जो टीम फाइट है इसका भरपाई करेंगे लॉर्ड लेके। उसके साथ केलिया किडनैप करके टावर के अंदर जरूर लेके जाएंगे, लेकिन लॉर्ड
आप यहाँ पे खो चुके हैं। तो अब फाइट ज्यादा ओवर एक्सटेंड करने का कोई फायदा नहीं है, पीछे हट जाएंगे क्योंकि मिनियंस के आपके यहाँ पे ऑलरेडी जो है वेव वो आ चुकी है, प्रेशर जो है ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। अब सबसे बेहतर यही रहेगा कि पीछे हट के इस लेन को डिफेंड किया जाए, इस लॉर्ड को जल्द से जल्द खत्म किया जाए और एक बार फिर से यहाँ पे जो फाइट है उसके लिए रेडी हुआ जाए। जी बिल्कुल शिंदा भाई यहाँ पे कुछ ज्यादा आगे चले गए थे, इसलिए उनको जो यहाँ पे भाई लिटरली जो है डॉट डॉट कर दिया गया है। और यहाँ पे शिंदा अभी राइट नाउ यामा स्पोर्ट्स का जो फिर से दबाव जो है, जो पकड़ है, वो यहाँ पे हमें देखने का मौका दिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए लॉर्ड डिफेंड करते करते उनके टर्रेट जो है बाकी जो है वो खत्म हो चुके हैं। लॉर्ड ये जो टर्रेट भी खत्म कर देंगे, इनर टर्रेट की तरफ जाएंगे लॉर्ड, लेकिन उससे पहले एचपी कम हो जाएगा। यहाँ पे कैलिया जो है कोशिश किया था किडनैप करने की अपने सुनामी स्लैम के द्वारा, लेकिन उनको फंसाया गया है। रूबी का जब स्किल यूज हो चुका है, यहाँ पे बहुत जल्दी हमें फ्रेमिस का अल्टीमेट देखने की मौका दिया जाएगा। फेडरिन को भी डैमेज लग रहा है, फेडरिन जो है स्टॉक अप करेंगे, वेट करेंगे कि एंड मोमेंट पे जो है वहाँ पे अपना अल्टीमेट दिया जाए। एस्मर्ल्डा फ्रंट में खेलने की कोशिश करेंगे, उनके पास शील्ड है, लेकिन यहाँ पे फाइट नहीं लेंगे। यामा को जो चाहिए था वो उनको ऑलरेडी मिल गया है, उनको चाहिए था टर्रेट, वो लिटरली ले लिया गया है। लेकिन अगर एस्मर्ल्डा इतना आगे जाकर पोक करने की कोशिश करेंगे तो टीम फाइट देखने को मौका दिया जाएगा, टीम फाइट देखने को मौका दिया जाएगा। किमी के पास मौका रहेगा उनको वाइप आउट करने का, और इसके पास स्ट्रॉन्ग स्लैम देखने को मिला, टार्ट के अंदर लेके चले गए, लेकिन फाइनल्स का अल्टीमेट उसकी वजह से जो उनको मौत नहीं दिया जाएगा। ये इसका मतलब है तो यहाँ पे मेगा किल लेके जाएंगे, एक देखने को मिला, किलिंग्स भी लेके जाएंगे। किमी यहाँ पे एचपी बहुत ही ज्यादा कम है, हिलता बहुत ज्यादा फोकस करेंगे मारने की, लेकिन मार नहीं पाएंगे। यहाँ पे बहुत ज्यादा एचपी कम है। अभी राइट नाउ जो है लापू लापू बैट्समैन का यूज करते हुए कोशिश करेंगे कि एक और मौत दी जाए। फाइनल्स के एचपी बहुत ही कम है, अनस्टॉपेबल लेके ट्रेजर जाएंगे, ट्रेजर का डैमेज स्पाइक बहुत ही ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे अभी भी जो है पॉइंट बैठा हुआ है, अगर पोक करने जाएंगे तो लापू लापू की उनको मौत दिया जाएगा इजीली भाई, क्योंकि लापू लापू पोक करने की कोशिश करेंगे और ट्रेजर पे वाइप आउट कर सकते हैं लिटरली राइट नाउ। लेकिन यहाँ पे लापू लापू अपना हार नहीं मारेंगे, क्लींस पे लेके जाएंगे, फाइनल्स को बाहर निकालेंगे। एचपी बहुत ही क्या है, किमी इसी का बदला लेते हुए शायद जो है कोशिश करेंगे यहाँ पे ट्रेजर को गेम से बाहर निकाल दिया जाए। बिल्कुल, यहाँ पे यामा पूरी तरीके से जा चुकी थी अंदर और हिल्डा फिर दोबारा यहाँ पे मार्क जरूर किया था, लेकिन किमी बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर सकती है आपको। उनके ऊपर आप जाने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन उनके पास स्किल्स है गाइड करने की, और वही उन्होंने किया। वहां पे हिल्डा को अपने जान से हाथ धोना पड़ा वहां पे कहीं ना कहीं, और यामा पूरी तरीके से टावर के अंदर जा चुकी थी। एक मैसिव फाइट यहाँ पे ली यामा ने पूरी तरीके से। और देखिए ये कहीं ना थोड़ा सा दिक्कत का सामना हो सकता है, क्योंकि अगर वहां पे टीम धाराशायी होती तो गेम एंड होने के चांसेस बढ़ सकते थे, और कहीं ना कहीं देखिए वो जो टावर है वो जरूर जा सकते थे। तो यहाँ पे यामा स्पोर्ट्स को थोड़ा समझ के रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे गलती करी अब तो दिक्कत का सामना हो सकता है, क्योंकि देखिए लॉर्ड आने का समय हो चुका है। अगर लॉर्ड के समय यहाँ पे पल पल का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एक मिस्टेक यहाँ पे के मैन कर सकती है। तो ये मिस्टेक यहाँ पे नहीं करे तो अच्छा ही होगा, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं मेरे को लगता है वीरे को पहले यहाँ पे टारगेट करना पड़ेगा अगर जीतना है तो, क्योंकि उनका अल्टीमेट कहीं ना कहीं गेम चेंजर साबित होता हुआ दिख रहा है हमारी। लेकिन यहाँ पे किडनैप करके ले गए, जरूर गए थे अंदर की तरफ, 4 बंदे आ चुके हैं सामने की तरफ खड़े हुए। उसी के साथ डैमेज लगातार दिया जाएगा। फेडरिन किसी तरीके से टॉन्ट मार के निकलेंगे। एस्मर्ल्डा हील का इस्तेमाल करते हुए बेट करने का कोशिश करते हुए यहाँ पे जाएंगे, टावर के अंदर घुसे हैं। डबल्स यहाँ पे देखिए नॉकडाउन दिया गया है, 7 एचपी कम होते हुए भी जल्दी जा सकते, लेकिन व्योरे का अल्टीमेट फिर दोबारा काम में आता हुआ दिखेगा। रारन करेंगे एक बंदे को धाराशाही, 4 के साथ उसकी तरह से यहाँ पे दिया जाएगा। लापू लापू में बचाएंगे इस तरह से किमी को, और उसी के साथ पीछे हटते हुए दिखेंगे 2 बंदे धाराशाही हो चुके हैं। 3 वर्सेस 5 अभी होने जा रहा है। लॉर्ड अभी मिल चुका है यहाँ स्पोर्ट्स को इजीली, और इसी के साथ लगता है मेरे को इस लॉर्ड के साथ खत्म करने का प्रयास इजीली कर सकती हैं, क्योंकि देखिए व्यूले का अल्टीमेट इस बंदे के हाथ में जब भी प्रॉमिस आता है, इसका गेम प्ले एकदम काबिले तारीफ होता है। जय भाई इनका अल्टीमेट जिस प्रकार से पड़ता है, हर बार गेम चेंजर अल्टीमेट मारते हैं अपनी टीम के लिए। लेकिन देखना पड़ेगा यहाँ पे किस प्रकार से किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंडिया क्या पीछे से हंसते हुए बाल बचते हुए किमी के लिए, और इसके साथ डैमेज दिया जाए यहाँ पे, लेकिन रारन सस्टेन करते हुए निकलेंगे और वो डैमेज यहाँ पे लेने का प्रयास, लेकिन अल्टी सारी जा चुकी है, रिसोर्सेज सारे वेस्ट हो चुके हैं, और इस रिसोर्स के साथ यहाँ पे एक और रिसोर्सेज वेस्ट होता हुआ दिखेगा। विंक यहाँ पे अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण किल निकालेंगे, परंतु लॉर्ड जो है वो मिड लेन से आ रहा है, तो इसको रोकना जरूरी यहाँ पे रहेगा। लेमन यहाँ पे अल्टीमेट का इस्तेमाल जरूर किया डार्क के ऊपर, लेकिन डार्क बचते हुए निकलेंगे, और एक बार फिर से बढ़िया डिफेंस हमें देखने को मिला। लॉर्ड डिफेंड हो गया है, परंतु आपका इनविटेड टरेट मिड का वो जा चुका है, टॉप का टरेट यहाँ पे ऑलमोस्ट जा चुका है। उसी के साथ लेन कंट्रोल यामा स्पोर्ट्स के हाथ में है, और अगर जीतना है तो यहाँ पे संभल के खेलना पड़ेगा,
एक अच्छी फाइट यहाँ पे गेम बदल सकती है, लेकिन उसके लिए उससे पहले इनको जो है मैप को अपने कंट्रोल में लाना पड़ेगा और मैप कंट्रोल तभी आएगा जब यामा स्पोर्ट्स जल्दबाजी में कोई गलती करे। उसका इंतजार करना पड़ेगा। सब्र का फल मीठा होता है और इस मीठे फल को पाने के लिए आपको सब्र का इम्तिहान देना पड़ेगा। जी बिल्कुल शिंदा, यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा राइट नाउ सभी टीम्स दोनों टीम्स जो है अच्छी गेम प्ले कर रही है, लेकिन यहाँ पे फाइटर जो है लापू लापू ट्रेजला जैसे कोर की तरह गेम प्ले कर रहे हैं। यहाँ पे अनस्टॉपेबल मॉन्स्टर की लेके दोनों टीम के फाइटर जा रहे हैं भाई लिटरली, और ये चीज काफी देखना। इसके साथ यहाँ पे सोनामी फिल्म का यूज हो चुका है, फ्रेम्स का अल्टीमेट टेक्निक मौका दिया जाएगा। अगर यहाँ पे लो एचपी होते पीछे से आ चुके, यहाँ पे एक और किल शॉट देखिए कीमी को इधर पर शट डाउन दिया जाएगा। प्रॉपर मार्क किए हैं, प्रॉपर मार्क करके कीमी को गेम से बाहर निकाल दिया गया। क्या ही गेम प्ले था यहाँ पे यामा स्पोर्ट्स की तरफ से। एचपी काफी कम है, बचने की कोशिश करेंगे लेकिन उनको बचने की शायद मौका दिया नहीं जाएगा। 5 लोगों के बीच में जो है यहाँ पे गैंग बैंग जो है स्मार्ट लगा साथ होने वाला है। यहाँ पे बहुत ही जल्दी स्मार्ट लगा जो है मौत हमें देखने को मौका देगा। अभी 3 लोग बचे हुए हैं, फेडरिन अभी भी है तो सस्टेन कर सकते हैं। इसके साथ लापो लापो अच्छा खासा गेम पे दिखाएंगे। सुनामी स्लैम को शायद यूज किया जाएगा, लेकिन सुनामी स्लैम से क्या ही कर सकते हैं। मिनियंस जो है यहाँ पे आ रहे हैं, अभी 5 वर्सेस 3 होने वाला है। यहाँ पे फ्रेम्स का अल्टीमेट फिर से यूज होगा, टर्रेट के अंदर फाइट लेंगे। यहाँ पे इजी विन जो है शायद मुझे देखने का मौका दिया, शट डाउन दे दिया गया। मॉन्स्टर की लेके लापो लापो क्या ही गेम पे दिखा रहा है। एचपी कम है, पीछे की तरफ जाने की कोशिश कर, लेकिन ये टर्रेट शायद बच नहीं पाएगा, शट डाउन दे देगा रूबी की तरफ से। इसके साथ साथ यामा स्पोर्ट्स जो है भाई रिकॉल दिखाते हुए फाइनल मैच का जो फाइनल का जो लास्ट मैच का गेम तो शायद निकाल के ले जाएंगे। मिनियंस आ चुके हैं, टाइट पे फोकस कर जाए। इसके साथ साथ यामा स्पोर्ट्स जीत चुके हैं मोबा राइजिंग स्टार सीजन 3 के ग्रैंड फिनाले। जी बिल्कुल, एकदम आए एकदम तड़के भड़के और इसी के साथ बेहतरीन गेम प्ले का प्रदर्शन करते हुए। लेकिन कहीं ना कहीं एक और बात करनी पड़ेगी आपको, शैडो स्पोर्ट्स पीछे नहीं थी, बराबर की टक्कर दी थी इन्होंने। यहाँ पे टीम फाइट की बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं यामा स्पोर्ट्स आगे की तरफ चलते हुए, वो जो है हर एक चुनाव को पार करते हुए उनकी तरफ से आगे बढ़ते हुए और इस पारी को जीतते हुए गई हैं। बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले, बहुत ही बेहतरीन टीम्स का यहाँ पे हमें सिनर्जी देखने को मिला। उसके साथ अल्टीमेट कॉम्बोज हमें देखने को मिले। काबिले तारीफ दोनों ही टीम की तरफ से और कंग्रेचुलेशंस टू यामा स्पोर्ट्स इस खेल के विजेता यहाँ पे बनने के लिए। तब तक के लिए जय भाई, संभालिए। जी बिल्कुल शिंदा भाई, यहाँ पे अगर रिप्ले मोमेंट हो ना, वहां पे देखिए एविस्टीजे का क्या ही पोक मोमेंट था। वो लिटरली पीछे से जाके कीमी को मार के वो विनिंग पॉइंट था भाई। एविस्टीजे फाइट में नहीं गया, वहाँ पे फाइट हो रहा था, वेट किया, कीमी जैसे ही निकला उनको लिटरली नाटालिया की तरह दिए और लिटरली हिट करके गेम को खत्म किया। यहाँ पे एविस्टीजे का काफी ज्यादा की मोमेंट्स पे जो उन्होंने मार्क किया प्रॉपर था, क्योंकि नाटालिया भी जो यहाँ पे जो सॉरी यहाँ पे कीमी काफी ज्यादा डैमेज दे रहे थे, तो वो चीज यहाँ पे देखने की मौका दिया गया। इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूंगा फाइनली मोबा राइजिंग स्टार सीजन 3 जो है आज का जो आखिरी मैच और ग्रैंड फिनाले जो है वो खत्म हो चुका है। तो मैं बस 2-3 बातें बोलना चाहूंगा कि स्टार्टिंग से मैं शिंदा यहाँ पे जो हमारे भाई सनी भाई जो है वो अभी शायद माइक पे आने वाले हैं थोड़ी देर में, उन्होंने जो है फिर हमारा जो रियूल भाई जो है वो जो है उनको कैसे भूल सकते हैं। इन्होंने जो इतना अच्छा जो टूर्नामेंट लाया है, सीजन 3 करवाया है, अब बहुत ही जल्दी सीजन 4-5 जो भी देखने की मौका देंगे और हमें भी कास्टिंग की मौका देंगे, और हमारे प्यारे व्यूअर्स जो बहुत ज्यादा सपोर्ट किया हम लोगों को, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं था जय और मैं साथ सनी, सॉरी मैं साथ शिंदा, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुका राइट नाउ, और सनी भाई आई थिंक अभी लेंगे यहाँ से टेक ओवर। तब तक के लिए गुड नाइट। 10 मिनट में सनी भाई आ रहे हैं, अभी कहीं जाइएगा मत, कोई गिव भी शायद हो सकता है। सनी बोल रहा है कि 10 मिनट में वो रिटर्न आ रहे। Coming to MLBB, Chaos Clash. Team up in trios, begin at level 3, and fight on a fresh map with no minions or turrets. During the preparation phase, grab Chaos Fragments to boost your power. As the match goes on, the Annihilation Tide emerges, pushing the action to the limit. Here's a closer look at how this new mode works. Chaos Clash is a multi-round 3 versus 3 mode. Wipe out the entire enemy team to win the round. Teams lose HP each time they are defeated. If a team's HP drops to 0, they're eliminated. Rounds continue until only one champion remains. When there's an odd number of teams, one team will sit out the round. After certain rounds, heroes automatically level up and earn gold. Use this time to buy equipment and boost your power. All full equipment except boots costs 2,000 gold. From round 11 onwards, teams earn bonus gold. Adapt your loadout and strategy to stay ahead.
the start of each round, you will receive random chaos fragments that boost your power. You can also refresh fragments to re-roll their effects, with 2 refreshes per round. The game offers a wide variety of fragments, each with unique effects, so you can mix and match to create your own playstyle. For example, tank fragments make your hero tougher and deal damage back to attackers. Marksmen who pick range-enhancing fragments can safely deal damage from afar. And that's just the start! Countless other powerful fragments and combinations are ready for you to try. As rounds progress, the Annihilation Tide starts shrinking across the map. Heroes outside the tide take sustained damage. Master this mechanic, and it can swing the battle in your favor. For instance, heroes with knockback or displacement abilities can push enemies into the tide. Surprise your opponents and watch them struggle against the sustained damage. The new 3 vs 3 mode, Chaos Clash, is coming soon. With a variety of chaos fragments, every match brings a fresh experience. The shrinking zone adds fast-paced, thrilling action, and new map buffs further empower heroes. Exciting, innovative, and powerful new strategies await. Are you ready to try them all? Clouds, follow my flow. Let the shifting cloud witness our adventure. Creators, streamers, and gamers. Listen. Do you wanna get famous? Well, now's the chance. We are kickstarting our journey with MOBA 5v5 community, connecting creators, brands, and tournaments like never before. If you love content, collabs, and gaming energy, TactX is where you belong. Whether you create, sponsor, or host, TactX is your bridge to visibility and growth. Tactical solutions by gamers, for creators, built for impact. Let's grow together. A brand new mode is coming to MLBB, Chaos Clash. Team up in trios, begin at level 3, and fight on a fresh map with no minions or turrets. During the preparation phase, grab chaos fragments to boost your power. As the match goes on, the Annihilation Tide emerges, pushing the action to the limit. Here's a closer look at how this new mode works. Chaos Clash is a multi-round 3 vs 3 mode. Wipe out the entire enemy team to win the round. Teams lose HP each time they are defeated. If a team's HP drops to 0, they're eliminated. Rounds continue until only one champion remains. When there's an odd number of teams, one team will sit out the round.
After certain rounds, heroes automatically level up and earn gold. Use this time to buy equipment and boost your power. All full equipment except boots costs 2,000 gold. From round 11 onwards, teams earn bonus gold. Adapt your loadout and strategy to stay ahead. At the start of each round, you will receive random chaos fragments that boost your power. You can also refresh fragments to re-roll their effects, with 2 refreshes per round. The game offers a wide variety of fragments, each with unique effects, so you can mix and match to create your own playstyle. For example, tank fragments make your hero tougher and deal damage back to attackers. Marksmen who pick range-enhancing fragments can safely deal damage from afar. And that's just the start! Countless other powerful fragments and combinations are ready for you to try. As rounds progress, the Annihilation Tide starts shrinking across the map. Heroes outside the tide take sustained damage. Master this mechanic, and it can swing the battle in your favor. For instance, heroes with knockback or displacement abilities can push enemies into the tide. Surprise your opponents and watch them struggle against the sustained damage. The new 3 vs 3 mode, Chaos Clash, is coming soon. With a variety of chaos fragments, every match brings a fresh experience. The shrinking zone adds fast-paced, thrilling action, and new map buffs further empower heroes. Exciting, innovative, and powerful new strategies await. Are you ready to try them all? Clouds, follow my flow. Let the shifting cloud witness our adventure. Creators, streamers, and gamers. Listen. Do you wanna get famous? Well, now's the chance. We are kickstarting our journey with MOBA 5v5 community, connecting creators, brands, and tournaments like never before. If you love content, collabs, and gaming energy, TactX is where you belong. Whether you create, sponsor, or host, TactX is your bridge to visibility and growth. Tactical solutions by gamers, for creators, built for impact. Let's grow together. A brand new mode is coming to MLBB, Chaos Clash. Team up in trios, begin at level 3, and fight on a fresh map with no minions or turrets. During the preparation phase, grab chaos fragments to boost your power. As the match goes on, the Annihilation Tide emerges, pushing the action to the limit. Here's a closer look at how this new mode works.
Chaos Clash is a multi-round 3 versus 3 mode. Wipe out the entire enemy team to win the round. Teams lose HP each time they are defeated. If a team's HP drops to 0, check mic testing 1 2 3 1 2 3 W खंबा गाइस कौन कौन है यहाँ पे थोड़ा सा ये करने दो Perfect. चलो कौन कौन है भाई how was the matches yes tickets 3000 diamonds let me check the message as well हो गया भाई राफल तो पहले स्पिन करते हैं डब्लू खंबा यस सो तो पहले स्पिन मुझे वो शेयर कर दो शेयर कर दी मैंने भाई दैट वाज रियल भाई अगर तुमने रियल की आवाज नहीं पहचानी होगी तो पहले 10 बंदे भाई 1 के टिकट्स इज माइन तो रियल की आवाज है भाई तो द थिंग इज पहले 10 बंदे शफल करना है या रियल नहीं करना शफल करें कर लो शफल कर लो चलो शफल कर कोई रहे इशू नहीं हैं है these are all the tickets number पहले 10 टिकट्स जो आएंगे उनको मिलेंगे 50 डायमंड्स ठीक है पहले 10 टिकट्स तो बिना किसी 301 एंट्रीज है ना यस 301 4 सेकंड क्या करते हैं देखते हैं पहला बंदा कौन है जिसे 50 पहले 10 को डायमंड 50 डायमंड यस पहले 10 को 50 डायमंड इट इज गोना बी Izumi 053 congratulations for that 50 diamond right there we move करते हैं शफल मारते हैं सेकंड नंबर it's gonna be Izumi 021 as well 53 and 21 भाई ये दोनों टिकट्स 50 जीत चुके हैं let's see ticket number 3 here shuffle ticket number 3 it's gonna be Sama 05 कौन सा डालना है हाँ जी इज़ोमी 21 डालना है oh डाला 150 डायमंड्स भाई and Sama 058 कौन है he wants 50 diamond as well ये प्राइम प्राइम 058 प्राइम मेरा नाम कहाँ है भाई फी टिकट्स क्या है यार नाम नॉट अबाउट नेम्स टिकट्स का नाम है टिकट तुम खेलेंगे या वील यस 58 सामा 50 shuffle 1 ticket number 4 what's it's gonna be आजा भाई it's gonna be Rule 032 सामा का राफल आ गया जहाँ से सामा का राफल था एंड Rule 032 50 डायमंड्स जीत चुके हैं टिकट नंबर 5 की तरफ चलते हैं भाई टिकट नंबर 5 टिकट कैसे लेते हैं अब तो लेट हो गया भाई Kiki 010 ओके दैट्स गुड भाई Kiki 010 भी टिकट नंबर 5 Kiki 010 50 डायमंड्स अभी तो छोटे मोटा प्राइस है बड़ा वाला प्राइस मैं ले जाऊंगा तुम देखो सनी वाला जीतेगा Kiki 010 जिसका भी टिकेगा भाई तुम 50 जीत चुके हो वो मेरा है अबे चल रियल के पास सब है भरा है सही में तेरा है क्या चुनबुल भाई चलो टिकट नंबर 6 करते हैं शफल शफल नहीं लाल नोट पे लगा है It's gonna be Izumi 037 yet again भाई जिसका भी टिकेगा वो 50 जीत चुके हैं 50 डायमंड्स राइट अवे इसको रिमूव करते हैं 5-6 टिकट्स कौन सा इज़ोमी रुक जा टीम में देखना तेरी आवाज क्यों ब्रेक हो रही है Izumi 037 shuffle ticket number 7 ticket number 7 50 डायमंड्स ले कौन सा होने वाला टिकट नंबर 7 लेट्स सी
It's gonna be Izumi 48 as well भाई 50 भाई Izumi ले जा रही है. Sunny 69 is me. Izumi 048, you have 150 diamonds as well. Ticket रुकना number. एक बार. मेरे नाम से विन तो पक्का है, अभी एक ही विन आया भाई आपके नाम. Last ticket was Izumi 048. Who won the 1k diamonds? पहले हम 50 डायमंड्स कर रहे हैं, उसके बाद हम जाएंगे 200 डायमंड्स में, तो फिर 1000 डायमंड. अभी 50 के बाद 100 डायमंड्स है. 100. 50 के बाद 100 डायमंड्स है भाई. I will build the 1k diamonds. चलो I कर hope लो. you win. So भाई चलो 6-7 टिकट नंबर 8 50 डायमंड्स ले, देखते हैं कौन. Who is it gonna be? It's gonna be Sumi 007 भाई. I think ये अभी भी क्या है ना 007, अभी भी 007 उठाता है सारे. अग्नि 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 को 007 अग्नि भाई. लिखा है. He won 50 diamonds. चलो टिकट नंबर 9. This is gonna be ticket number 9 here. Let's see कौन जीतता है टिकट नंबर 9. It is gonna be Sunny Boy 23. ये अभी भी क्या I think. हाँ ये अभी भी है ये. Sunny 23 ये लास्ट पक्का टाइम भी नहीं है. 23 किया था. And he won 50 diamonds as well. It's gonna be 8-9. Ticket number 10 भाई. This is gonna be the final ticket for 50 diamonds. इसके बाद हम 100 diamonds में जाएंगे. 1k मेरा है. देखते हैं भाई किसका है. 007 मेरा क्या उठा है. Sunny 036 भाई. सनी वाले तो लकी होते हैं. The last ticket for 50 diamonds. आथर जीत गया. ऑथर जीत गया. नाइस यार. Did I win? नहीं भाई. ये देखो भाई, ये देखो. Hello, Imli. Yes, you got the 50 diamonds here. The last ticket for 50 diamonds goes to 36. Sunny 36. जिसका भी टिकट है वो 50 डायमंड्स जीत चुका है. रियूल अब कितने टिकट्स हैं 100 डायमंड वाले? 7 7 tickets हैं 100 tickets डायमंड for वाले भाई. 100 diamonds. For 100 diamonds, there's going to be 7 tickets. जो next 7 tickets निकलेंगे उनको हम 100 diamonds ठीक है. Let's see. पहला टिकट जिसके थ्रू आपको 100 diamonds मिल सकते हैं. It's going to be Sunny 038. ठीक है भाई. रिस्पेक्ट करो भाई. Sunny 038. जिसका भी टिकट है congratulations to you भाई. You won 100 diamonds. We have 6 more tickets 100 diamonds से. वो भी देखना है भाई कौन जीतता है. आथर फिर से जीत गया. नाइस. चलो शफल करते हैं. 6 more tickets for 100 diamonds. उसके बाद 500 diamonds का I think. The 6th ticket. Who's gonna be the lucky one here? Did I win anything? It is gonna be Izumi 016. किसका टिकट है Izumi 016? Congratulations to you as well. 100 diamonds has been won by you. सुबह में 100 डायमंड लेके चलेगा ये बंदा. नाइस. Izumi 016. Congratulations to you yet again. टिकट नंबर 5 शीट्स बची हैं. 5th टिकट देखते हैं 100 डायमंड्स का कौन सा होने वाला है. It is gonna be Ryul 033. Finally भाई Ryul का नाम आ गया. I thought नाम missing था. Finally Izumi जीत गई. What the fuck? Izumi को 100 डायमंड्स मिल गए. Ryul 033 I think Izumi का था. Ryul Izumi जीत गई. 033. Izumi को 100 डायमंड्स मिल चुके हैं यहाँ पे. That was ticket number 5. 4 more tickets बची है. Yes, 4 more tickets are left. देखते हैं भाई. डायमंड जीत गई. Congratulations. Izumi 100. Sama 013 मेरा है. आएगा तो भाई मेरा है Ryul. नाइस केस. Ryul याद है इसने तो डायमंड्स दिए थे. इसको भी मत दियो भाई. नहीं देना. ओ हाँ 4 टिकट्स Izumi याद. याद है ना भाई. Izumi है क्या यहाँ पे? 5 4 3 2 नहीं है भाई Izumi. चलो नेक्स्ट टिकट भाई. 4 टिकट्स रिमेनिंग 100 डायमंड्स ले. It's gonna be Ryul 025 भाई. Congratulations to Ryul 025 जिसने भी टिकट लिया था भाई. आप 100 डायमंड्स जीत चुके हैं. रारन है भाई. रारन. Rarin has won 025 Ryul. तो shuffle करते हैं. 3 more tickets are left here. I think yes ना Ryul. 3 टिकट्स ही है ना. हाँ जी. हाँ
3 more tickets for are 100 left, diamonds. yes. 3 more tickets for 100 diamonds और 500 diamonds में आएंगे. Shuffle मारते हैं भाई. अरे 300 पे आएंगे. Okay, Ryu 041. ये सारे Ryu के आ रहे हैं. वो भी 100 डायमंड जीत चुके हैं भाई. रेरन तो यामा का जनरल आई थिंक वही रेरन है यार शायद. माइट बी. नहीं अलग है शायद से. अलग रेरन अलग है. वाला है मे बी. मे बी नेवर नो. नाम तो सेम है शायद. हो सकता है भाई. हमने आइडेंटिटी नहीं पूछी. 41 आ चुका है. 41 भी 100 डायमंड जीत चुके हैं. वी हैव 2 मोर टिकट्स लेफ्ट फॉर 100 डायमंड्स. रिमूव मार देते हैं. शफल शफल. Let the lady let decide भाई कौन जीतता है. Sunny 048 भाई किसका भी है. आप 100 डायमंड जीत चुके हो भाई. Congratulations to you. जिसने भी Sunny डाला फिर से जीत गई 048 भाई. डाला 100 डायमंड्स as well. नाइस यार डाला. Sunny 048 you have 100 diamonds. We have one more ticket left for 100 diamonds here. Let's see last lucky winner 100 diamonds set कौन सा होता है. Oh, Izumi 059. The last winner is from Izumi 059. Congratulations to you. 100 diamonds has been won by you. Water boy. Water boy. That's भाई इससे काट भाई. Water boy को नहीं देंगे टाइम इससे काट. Congratulations to Water boy भाई. तुम 100 diamonds जीत चुके हो भाई. You brought Izumi 059. I think इसने 2-3 टिकट ही खरीदे थे. And उसमें उसी में 100 diamonds निकल गया. तो that's good भाई. Congratulations to you. And इसी के साथ I think 100 diamonds वाले खत्म होते हैं. अब कौन से डायमंड्स वाले हैं. अब 300 डायमंड्स वाला एक होगा. 1 for 300 diamonds, 1 for 500 diamonds and 1 for 1000. ये 8 टिकट है. 300 डायमंड वाला देखते हैं भाई. मेरा भी टिकट आएगा. लेट्स सी भाई. यू कैन गेट 300 डायमंड्स. 500 क्या 1000. दिस इज फॉर 300 डायमंड्स गाइस. इस टिकट में आएगा उसको 300 डायमंड्स मिलेंगे. Who is it gonna be? It's gonna be from Sunny bhai. It's gonna be from Izumi, I think. It's gonna be Izumi 054. Izumi 054. Congratulations to you bhai. You चप्पल चोर भाई. चप्पल चोर. Chappal Chor Trader. He has won 300 diamonds here bhai. Congratulations to Izumi 054. आप 300 दूसरे वाला चप्पल चोर है. अच्छा दूसरा वाला नहीं है. My bad भाई. बहुत सारे चप्पल चोर. Izumi 054, congratulations to you bhai. You have won 300 diamonds. We have 2 more spins left. थोड़ा सा टाइम बढ़ा देते हैं. Next spin is gonna be for 500 diamonds, right? Real? हाँ 500 diamonds. 500 diamonds से I believe Sunny will let me win. Why was Sama 6930? क्योंकि इस पर 69 भाई. 69 का एक्स्ट्रा होता है भाई. It's simple. The next ticket is gonna be for 500 diamonds. कौन होगा भाई 500 डायमंड्स. अभी शफल मार दिया है. टाइम बढ़ा दिया. लेट्स सी भाई. 500. It's gonna be from Sunny भाई. It's gonna be from Ryul. Ryul 015 भाई. Ryul 015. रारन जीत गया भाई. रारन फिर से जीत गया भाई. Ryul 015. He won 500 diamonds. I think he won 700 diamonds अभी तक. उसने 30 टिकट्स लिए. इसने 30 टिकट्स लिया and he won around 700 diamonds. Ryul 015. Congratulations for you for winning 500 diamonds here. Izumi equals to W. W तो नहीं दिखता भाई नाम पे. Let's see last ticket भाई. थोड़ा सा टाइम और बढ़ा दो. 20 सेकंड कर दो. ये ट्रिक है भाई. 1000 diamonds. This is for 1000 diamonds. Who is it gonna be? 1000 diamonds here. Let's see भाई. 1000 diamonds. Gonna be Sunny. Kama 69 के ऊपर था. Kama 28. Kama 28. What the fuck? Kama 28 किसका है? Kama 28 has won 1000 चप्पल diamonds. चोर भाई. चप्पल चोर again. Chappal Chor has done it भाई. I don't even use my own name given because I never been that name. भाई सामर का टिकट जीत गया भाई. 28. You underestimating him भाई.
आई बिलीव कि अभी सनी 002 आएगा, गलत बिलीव था भाई। व्हील सामा 028 हैज वन 1000 डायमंड्स हियर। चप्पल चोर भाई कांग्रेचुलेशंस इसके भाई। तो फिर आई थिंक इसने 1000 भाई डायमंड है। 20 टिकट इसने 20 टिकट ली। 1500 ले गया, 1200। 1500। हाँ 1500। हाँ 1500 ले गया। ये 1500 ले गया 50 भाई। 50 डायमंड के 10 और करवा देंगे क्या? 5 करवा देते हैं, चल 50 50। ठीक है करा दो, चलो करा दो, भाई, करा दो। चलो गाइस 50 50 डायमंड के 5 और करवाते हैं, 250 डायमंड्स मोर। नहीं मिला तो अच्छा, अभी 50 डायमंड के करवा रहे हैं भाई। नेक्स्ट 5 जो टिकट्स आएंगे उनको 50 डायमंड मिलेंगे। आई थिंक तुम लोग खुश हो। लक के ऊपर बेस है भाई। Stumble chore of you using my tickets. It should be 50-50. The next 5 tickets जो आएंगे उनको 50-50 डायमंड्स भी मिलेंगे। Let's see 50 डायमंड्स किसको मिलते हैं भाई, नेक्स्ट 50 डायमंड्स। रेड व्हील है, लास्ट टाइम 1000 तुम जीते थे भाई। हाँ भाई। लास्ट टाइम तो 1000 तेरे को मिले थे भाई। अब रेड व्हील कह रहे भाई ड्युअलिटी ऑफ विन देखो भाई, लास्ट टाइम तो 1000 कुछ जीते थे। ओके सनी 49 भाई, ही गॉट 50 डायमंड्स भाई। किसका है सनी 49? 48 तो डाला गया था। सनी 49 गॉट द 50 डायमंड्स हियर भाई। कहाँ है सनी 49? सिएना, सिएना है भाई, सिएना, सिएना, सिएना। कौन है? नाम सुना सुना सा लग रहा है, बाना है क्या? नहीं 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 नहीं, बारना नहीं है, अलग है कोई। सियाना गॉट अरे दी वो 50। साथ नहीं होती वो, हम्म, आथर के साथ, आथर स्टोर पे। अच्छा सियाना वन दी 50 डायमंड्स हियर भाई, सनी 49। यार शफल करते हैं, टाइम तो और कम कर देते हैं भाई, डिनर भी करना है, 10 सेकंड कर देते हैं। Who's it gonna be? Izumi008 got the 50 diamonds as well, भाई congratulations to you. You won the 50 diamonds here. Let's see next, shuffle shuffle shuffle. The next ticket उसका भी 50 diamonds का होगा, देखते हैं कौन है भाई। ऊपर है, it's gonna be Sama 69. Sama 69 किसका था? Sama सामा 69। 69 तो I think रारन का ही था, रारन नहीं लिया था सामा 69। हाँ Holy रारन का था। shit, Sama 69 एक टिकट था भाई, Sama 69 का 30 रुपए का। वो उससे भी 50 जीत वो भी गया। जीत गया मजे मजे में भाई। 69 मैंने डाला बोला था था भाई भाई। लकी टिकट है, मैंने बोला था भाई लकी टिकट है, होली देखो। शिट भाई, एक टिकट था 30 रुपए का भाई, उससे ही 50 डायमंड दे गया भाई। ये नहीं नाइस यार, नाइस भाई, नाइस वन, नाइस वन। टू मोर टिकट्स आर लेफ्ट भाई फॉर 50 डायमंड्स। लेट्स सी भाई। सामा 60 मैं लेने वाला था, ड्यूल ने बोला किसी और ने खरीद भाई। 50 डायमंड्स फॉर स्पेंडिंग 1 आवर्स। नहीं, वी हैव 1000 डायमंड्स, 500,000 डायमंड्स, 300 डायमंड्स। ओ वेट, 300 500 1000 डायमंड्स भी थे। Sama 40 150 diamonds here as well. राइनहार्ट, राइनहार्ट। It is gonna be Reinhardt by the owner of Rayuga eSports who got the 50 diamonds here. Shuffle, 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 shuffle. The last 50 diamonds is here, bhai. Who's it gonna be? Oh, it's gonna be Sunny. Sunny008. Congratulations to Sunny008 man. You got the 50 diamonds here. I think उसके साथ हमारा 3250 डायमंड का गिव अवे खत्म होता है काइंड ऑफ। एक और कराते 100 डायमंड का, क्या ही जा रहा है। 100 डायमंड का वन मोर भाई। चलो रियूल ने बोल दिया भाई।
अभी भी उम्मीद है भाई रियूल की तरफ से ग्रीन सिग्नल आ गया। मैं तो रात भर चढ़ते रहूंगा भाई स्पिन द व्हील, तो मजा आता है। ठीक है भाई। तुम देते रहो मुझे भाई। द नेक्स्ट टिकट जो आएगी उसको 100 डायमंड्स मिलने वाले हैं, ठीक है गाइस। द नेक्स्ट टिकट दैट्स गोना कम अप विल बी फॉर 100 डायमंड्स। रियूल की तरफ से ग्रीन लाइट आ गया। लेट्स सी भाई की तरफ से मिल भाई। रेड मत बोल भाई, तू 1000 डायमंड जीती है एंजल। थोड़ी तो शर्म करो भाई। हमसे यार शर्माना सही है पर थोड़ी तो शर्म रखो। सामा क्या है? नहीं, सामा 046, सामा 046, वेयर आर यू गाय? सामा 046 सामा 046 है तेरा चप्पल चप्पल चोर भाई। सामा 046 चप्पल चोर ही 1000 भाई डायमंड। कितने ले रहे हैं? नहीं भाई, फिर से घुमा देगा 200 कितने ले रहे डायमंड, हैं? 200 डायमंड। ठीक भाई 200 करा दे डायमंड भाई और दे। 200 डायमंड। चल भाई नेक्स्ट टिकट दैट्स गोना बी फॉर 200 डायमंड्स भाई। भाई अपने वाले में तो कोई नहीं जीत रहा। भाई सनी का तो आ ही नहीं रहा टिकट। मेरे भाई 200 रियूल नहीं आया भाई कब भाई, से। भाई सामा 69 आ रियूल गया। बस 2 बार आया। कंग्रेचुलेशंस यार सामा 046 भाई, फिर से जीत गया भाई। नेक्स्ट टिकट इट्स गोना बी 200 डायमंड भाई। तो भाई एक बार लाइक मार दो गाइस इफ यू आर न्यू। द नेक्स्ट टिकट जो आएगा, अगर आपके पास वो राफल टिकट है तो इट्स गोना बी फॉर 200 डायमंड्स। किस्मत तो मोटी है भाई, ठीक है किस्मत। शफल 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 1600 शफल। भाई, 1600 पता लगता कितने हैं। आई विल बी द विनर, लेट्स सी भाई। ऑल द बेस्ट टू यू, जीतोगे भाई, थोड़ा सा मुझे भी दे देना। पैसे नहीं देता, सारा काम करवाता है। द नेक्स्ट टिकट इज गोना बी फॉर 200 डायमंड्स। वो इज द लकी विनर, देखते हैं भाई। लेडी लक भाई, दे दो मेरे को। सॉन्ग तुम्हारा नंबर क्या है भाई? जस्ट स्पैम योर टिकट नंबर, मे बी द लेडी लक विल लिसन टू यू। वो चीज़ भी है, यू नेवर नो। इजुमी 013, चलो इजुमी 103, सनी 0 आ रहा है। ओ वेट, इजुमी के ऊपर आया। इजुमी 029, हु इज दिस? इजुमी 029। कॉस्ट है क्या? भाई कौन? कॉस्ट क्यों नहीं देना यार? कॉस्ट तो 150 दे, 50 का फिर घुमाएंगे। 150 लिख दे, 150 लिख दे। कॉस्ट कोई नहीं बताएगा वो 200 जीता है, ठीक है गाइस। गाइस गाइस गाइस, कॉस्ट तो बोलना कि वो 150 जीता है, ठीक है। 850 का और घुमाते हैं। सनी 03, और सनी शायद नहीं। नहीं है, सही है गाइस, ठीक है। यू गाइस आर विद मी ना? कॉस्ट को मत बताना, ठीक है, कि 200 जीता है वो, उसको बोलना 150 जीता है वो। 150 जीता है कॉस्ट को बोलना। 50 का मैं फिर से घुमाऊंगा, देखो। तुम मेरे साथ हो तो मैं कर दूंगा, तुम मेरे साथ नहीं है तो मैं नहीं घुमा रहा। बिट्रे मत करना सालो, क्लिप मत करना। अभी क्या घूम रहा है? द नेक्स्ट टिकट इज गोना बी फॉर 50। अब कोई कॉस्ट नहीं बताएगा कि वो 200 डायमंड जीता है, उसको हम 150 देंगे। वो 50 का दोबारा से घुमा रहा हूँ भाई, ठीक है। कोई कॉस्ट। इजुमी कंग्रेचुलेशन क्रॉस फॉर द विनिंग 150 डायमंड्स। यस दैट्स द स्पिरिट भाई। मेरे को नहीं मिल रहा डायमंड्स, आपको तो मिल जाएगा यार। यू वर इन द, थोड़ा सा हम गिफ्ट प्रोवाइड करते हैं भाई, क्रिसमस गिफ्ट होगा वही तरफ से। तो वी आर डूइंग वन मोर टिकट, वन मोर टिकट फॉर 50 डायमंड। जिसका भी मैं तो टिकट होगा बोलता हूँ उसको 50 डायमंड्स मिलेगा। मैं तो बोलता हूँ जितने स्ट्रीम पे उन्हीं का करा दे एक कर सकते हैं। 50 डायमंड। हटा दूं फिर इसको, सारे टिकट से नाम हटा रहा हूँ। हाँ हाँ। चलो जो स्ट्रीम में है उन्हीं का करवा देते हैं, हटा देते हैं। सब लिख दो थैंक यू क्रॉश। थैंक यू क्रॉश लिख दो, मैं तुम्हारा नाम लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। चैट में थैंक यू क्रॉश लिखो सब। राइट थैंक यू क्रॉश एंड आई विल राइट योर नेम इन द व्हील। लेट्स डू कंग्रेचुलेशंस, दैट्स वेरी नाइस भाई। 3 करा दो, 3 स्पिन करा दो 50 के। चलो 3 स्पिन फॉर 50-50। थैंक यू क्रॉश लिख दो भाई, थैंक यू क्रॉश डाल। क्या थैंक यू क्रॉश लिख दो गाइस बस। जो तूने लिखा है भाई स्पेशल सबसे पहले भाई लाइट वन
hype game लिखते भाई, thank you Gosh. Alucard only. Alucard only. रेरन भी आ गया अबे भाई। रारन भी है, रारन भी ओए है। ओए 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 ओए, इसका नाम ले, अरे नहीं लिख रहा मैं, हट हट। कितना रारन जीतेगा, रारन शर्म रारन, कर तू तो ले, कितना जीत गया। शर्म कर ले साले, शर्म कर ले, थोड़ी शर्म रारन कर तू ले भी कितना भाई। जीत गया भाई। थोड़ी शर्म कर ले भाई, 50 डायमंड दे देंगे गरीबर को, क्यों अपनी किस्मत लेके आ रहा है। Then it's there you go। मीट का भी लिख लेते हैं भाई। थैंक यू कॉश लिख दो भाई। चुनबुल, आपका नाम अगर लिखा है तो दोबारा मत बोलना भाई। चुनबुल, there you go। चिप ऑफिशियल है, चिप का चिप लिखूंगा भाई, पूरा नहीं लिखूंगा, स्पेलिंग थोड़े से है। 1 2 3 1 2 3 लिखना है। थैंक यू कॉस्ट, नेट कॉस्ट को पता चल जाएगा। अब वी इजोमी का नहीं लिखना है यार, ये कर रही है भाई कॉस्ट के बाद जाके। अलुकार्ड आपका नाम लिख दिया मैंने। जेनेक्स आपका नाम भी लिख दिया है। चिप ऑफिशियल आपका भी लिख दिया है। मीट आपका भी लिख दिया है। अलुकार्ड लिख दिया है। हाइपिंग गेम नेम, हाइप गेम नेम आपका भी लिख देता है। मेरा नाम किधर है, थैंक यू कॉश लिखो ना भाई। पाची भाई, पाची आपका भी लिख दिया है। मी थैंक यू कॉश लिखना भाई। जय भाई, तुम थैंक यू कॉश को नहीं लिखते यार। जय का भी लिख दिया है। मी द सेम, थैंक यू कॉश लिख दो भाई। थैंक यू कॉश लिख दो। लव यू कॉश, नाइस टू मीट यू ज़ूमी। वेरन तुम यहाँ हाइपर हो गया। ओए नींद से उठ गया, ओए नींद से उठ गया। भाई जो सोता है वो ठोता है भाई, so that's the thing। Congratulations क्रॉस बाय द वे भाई, you won 150 डायमंड्स भाई। मेरा नाम लिख दिया यार आप। यार ये क्या यार, इस उम्मीद यहाँ पे लिखा तो है। व्हाट इज दिस बिहेवियर, आपका नाम लिखा तो है यहाँ पे यार। जय भाई आपका नाम भी लिखा है यार यहाँ पे। यार तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो यार, यू शुड बी प्रोफेशनल यार। कैन एमएल, थैंक यू क्रॉस लिख दो। आई थिंक विद दैट आई विल बी स्पिनिंग नेक्स्ट 3 थैंक यू क्रॉस के बाद स्पिन कर रहा हूँ भाई मैं। नाम लिखा तो है भाई, देख ले मेरा नाम का है। हाइप गेमिंग आपका नाम भी तो लिखा है, ये देखो। थैंक यू क्रॉस। इजोमी आपका भी लिखा हुआ है, बहुत पहले लिख लिया था यार। इजोमी के बाद 40,000 डायमंड पड़े भाई, फिर भी आ रखी है भाई यहाँ पे भाई। हाइपिंग गेमिंग लिख दिया भाई। जय भाई आपका भी लिख दिया, सबका लिख दिया भाई स्ट्रीम पे। लव यू क्रॉस, ज़्यादा प्यार मत करो भाई, क्रॉस वापस भी प्यार दिखाता है। भाई जान, बेब जान, क्रॉस। प्लेन एमएल का भी लिख देते हैं, थैंक यू लिख दिया। तुम नेम लिखें भाई। हमजा खान, व्हाट द फक, मेरा नाम लिखो। तेरा नाम लिखा है इजूमी। इजूमी तेरा नाम लिखा है, अब तेरा नाम नहीं आएगा, तेरा सर आएगा। जस्ट बिकॉज यू अनॉयड मी। आई वांटेड टू बी नाइस टू यू भाई, पर अब तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया। तुम्हारा सर आएगा। मैंने पहले तो चुपचाप से नाम लिखा था भाई। Who won? What's the score? YAMA eSports won by 3-0, पर Shadow eSports ने अच्छी फाइट दी भाई, you have to give it to them। एक्सपीरियंस था YAMA eSports से बाद। Shadow eSports a wonderful fight was given, पर भाई पनिश किया YAMA eSports ने। The फाइट लेने आओगे 4v5, they punish again and again भाई। That was the thing, and 3-0 क्लीन स्वीप मारा भाई। पर भाई देख मुश्किल से मारा है, 15 मिनट के गेम थे, कहीं ना कहीं Shadow eSports आ सकती है भाई आगे। 15 मिनट की नहीं, 20 मिनट पूरे। 2 गेम, हाँ सारे तीनों गेम 20 मिनट चले। 2 गेम मुझे याद है पहले 20 क्यों मिनट नहीं चले। चला बाकी है। पहला वाला आई थिंक विद इन 15 मिनट्स हो गया था, पर बाकी 2 गेम भाई 20 मिनट। तो ऐसा भी नहीं है कि भाई दे दिया गेम 3-0, लड़के लिया यामा स्पोर्ट्स ने। बैक इज गुड भाई, थोड़ा सा कंपटीशन देखने में मजा आता है। आफ्टर स्निचिंग इजुमी वांट्स 50 डायमंड्स, ऐसी है यार इजुमी। इधर मेरा नाम क्यों नहीं है, क्योंकि आपने डोनेट किया है यार, कौशिक लिख देते हैं यार। चलो आई थिंक 3000 का राफिल था, 4000 हो गया। 8000 कोई ना भाई। So 3 spins because you are sponsoring here. Team BLX, you have to write thank you Kaushik भाई। Hyping Gaming आपका नाम लिखा है भाई, यहाँ पे लिखा है देखो, मैंने हाईलाइट भी कर दिया। Team IBX का भी लिख देते भाई। Team IBX, there you go, आपका नाम भी लिख दिया। No more entries, let's shuffle shuffle shuffle। जो पहले 3 नाम आएंगे उनको 50 डायमंड्स मिलेंगे भाई। Let's see। Hi, hi, hi. Hi Can I make a Zumi, how are you? declaration? Absolutely Zumi, the stage is yours भाई। Okay, so before we have this final spin for 350 diamonds, पहला as 50। a very, very honest and a good person,
I would like to declare something to, keep the community, in a good state and to avoid scams. So, Mr. Sunny here just deducted 50 diamonds from Kosh. So, Kosh actually. Muted. That's the thing, यार लोग भूल जाते हैं master control मेरे पास होता है and I muted them. And the first winner, congratulations, is going to be Song जिसको 50 डायमंड मिले. नेक्स्ट डायमंड की तरफ चलते हैं भाई. पता नहीं भाई कोई भी रैंडम घुस जाता है भाई, कुछ भी बोलने लगता है. We have to be like that ना भाई. So obsessed. ये एक तो मेरे 500 रुपए भी ले लिया भाई उसने, पर never mind. चलो the next person guys, next person who is gonna be जो 50 डायमंड जीते यहाँ पे. Okay, by the way guys, please vote कि मैं जीतूं, because मैं जो भी जीतूंगी वो तुम लोग के पास वापस आ जाएगा, ठीक है? So yeah, like, to be fair. Absolutely. So it's gonna be Celestial जो 50 डायमंड जीता है. It's not like competing in this tournament. नहीं यार वो छोटे टूर्नामेंट में नहीं खेलते, but if you want we can have teams and all with them. And Celestial is gonna be the second person जिसको 50 diamonds मिले हैं भाई. Thank you Kosh for donating 50 diamonds. And Izumi, you're donating 50 diamonds. I just होता है वो होता है. And there's a saying, right? There is no consent in that. You should be grateful 50 लिए हैं. मैं तो 100 का सोच रहा हूँ. Celestial 150 diamonds. The last person. The real 150 था 350 था. 350 what the fuck? 50 था भाई 50. अरे नहीं 50 के 350 तक की 150 तक. क्या 150 था 350 था. 350 था भाई. Yeah, the last 3 करना है ना. जिसको 50 डायमंड्स मिलते हैं. हेलो जय भाई, हाउ आर यू? मैं कुछ यहाँ पे बोलने आया हूँ मैं भी भाई. हाँ जी रुक जाओ. मेरे को कंप्लेन है कि मुझे हाँ जी बोलो. आपकी आवाज सबको सुनाई दे. कभी नहीं देते वो, कभी नहीं देते. मुझे आज तक नहीं मिला है. मुझे आज तक एक भी गिवे नहीं मिला है. Oh my god. असला भी रखते हैं पहलवान, ठीक है. I'm so sad. I really pray for your good luck. Okay, that's all I can do. नहीं सनी भाई मैं भी आज आया कीजू में. मैं तो भाई मैं भी डिक्लेयर करके जाता हूँ कि जितना बार भी मैंने पार्टिसिपेट किया भाई 10 डायमंड्स तो चल 5 डायमंड्स भी नसीब नहीं हुए. और बता ठीक क्यों करते हो भाई. चलो लास्ट पर्सन देखते हैं जिसको 50 डायमंड्स मिला है. कोई मिल सकता है. ने इजुमी का शाइनी टकला भी डाल दिया. इसमें तो ऑयल लगा के लगाया. ये वाला चैट जीपीटी निकाला था ना. हाँ ऑयल अप. ऑयल अप. ओए it's gonna be IGNN here. IGNN, are you there भाई? You 150 diamonds हो तो भाई कांटेक्ट करो भाई हमको. अब हो रहा होगा कमेटी में, किसी भी कमेटी का तो बताओ भाई. ड्यूल भाई. हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ 100 के तो 50 मार दूंगा एक बार. ठीक है भाई मार दो. चलो रिमूव करते हैं IGN एंड रियल. तब तक तो बैक हैंड में उससे इंफॉर्मेशन ले ले. So we're gonna spin 2 more here for 50 diamonds. Let's see किसको. The next person to get 50 diamonds here is. भाई मेरा नाम ही दे दे सनी. Thank you to Oshit for donating 50 diamonds yet again. Oshit जो 50 डायमंड डोनेट किया था वो फिर से मिल गया. That's the thing यार, तुम किसी की किस्मत से नहीं खींच सकते. Then again, thank you Oshit भाई for donating that 50 diamonds yet again. So we still have 100 diamonds. 2 स्पिन होंगे. नेक्स्ट 2 पर्सन जो आएंगे उनको 50 डायमंड्स मिलेंगे. जो जिसका है वो उसका ही है. मतलब कॉश अभी जीता 250 डायमंड्स. कॉश ऐसा कुछ नहीं है भाई. थैंक यू कॉश गाइस. सब थैंक यू भाई. यहाँ पे भी रिग्ड भाई. इजी मैम यहाँ पे भी रिग्ड कर रहे हैं भाई. कहीं पे तो हम लोगों को भी मौका दो इजी मैम. क्या मौका? बेचारे से 50 छीन के उसी को वापस दे रहे हो. His name came twice. He should get 250, right?
उसकी सिचुएशन और बुरी है। डालडा आप गलत समझ रहे सुनो हो, ना, ऐसा कुछ डालडा, ऐसा नहीं, डालडा, सॉन्ग, एंजल, ये 3-4 नाम छोड़ के बाकी नाम को भी मौका दो। भाई मेरे हाथ में होता तो सबसे पहले मेरा नाम। मैं इजवी मैम तुम्हें को बोल लगता है रहा मैं हूँ 2 कि बार किस कौशिक का बाकी नाम नाम को लेते भी आया मौका यहाँ पे? दो। कौशिक से लेते उसको तो ही ना जितवाता यार मैं। मेरे हाथ में। चलो द मैं क्या नेक्स्ट मौका पर्सन। दूं? हाँ जी, करो चलो करो। नेक्स्ट पर्सन जो 50 डायमंड जीत, कौन होने वाला? हैंड की कॉस्ट लिखते रहो यार, कॉस्ट की वजह से चल रहा है। इट इज गोना बी डाला इज हियर भाई। अबिस बोला अबिस था थोड़ा सा लेट भाई, हो गया यार तुम। डालडा नाम लिया, डालडा आ गया। डाला 150 डायमंड्स, द लास्ट पर्सन टू विन 50 डायमंड्स। हु इज इट गोना बी? अबिस अबिस भाई थोड़ा लेट हो गया तो पार्टी खत्म हो रही। The last person to get 50 diamonds, who is it gonna be, Army? Alucard is here, Martha. It is gonna be Alucard. Oh fuck. नहीं नहीं नहीं. अब Angel आएगा. No, it's gonna be Alucard only who gets the punch. तो भाई 100 के 2 और मार दूं क्या? भाई सो जा भाई। भाई मुझे तो मजा आ रहा है. अरे मार दे सानी भाई, एक मार दे, मार क्या दे पता 100 मेरा की। नाम आ जाए, मार दे भाई। भाई 2 मारता ना. चलो अब सही से आपका नाम लिख दिया मैंने, स्पेलिंग गलत हो गई क्योंकि 50 के मार दे। थैंक यू फॉर द सब्सक्रिप्शन भाई। पर 50 के 3 मार दे, 35 हो जाएंगे। 50 से 3 मार देते हैं। चलो the best easy, I wrote your name, forgot the spelling भाई. Let us spin. The next person जिसका नाम आएगा he will win 50 diamonds भाई. लूट लो वैसे मुझे भाई कांटेक्ट जैसे कर लेना जो जो जीत रहा है। Okay, it's मुझे gonna be पता नहीं है कार्ड Bana ऑनली here. कौन है। मेरा प्लीज हर्षल आपका भी लिख देते हैं, मेरा नाम नहीं. It's gonna be Bana here who gets the 50 diamond. हर्षल भाई देखो भाई भाई. भाई और अभी मैं तो देखा I see you. I see everyone भाई जो एक्टिव है. Shuffle 2 more for 50 diamonds here. Who's it gonna be? Let's see. आप कौन जीतेगा, एंजल? बीट हो सकता डालडा है. बढ़ना सब आ गया। Oh, so close. It's gonna be Zin's here. Zin's है क्या यहाँ पे? मैंने बहुत टाइम से रिंग्स है तो कांटेक्ट कर लेना भाई मुझे। Zin's है क्या यहाँ पे? 10 सेकंड तक गिनता हूँ आपका नाम. अगर आप नहीं हो, me always unlucky. Aren't we all भाई? मैं मोबाइल लेजेंड्स पे. I don't think so we are. हाँ हाँ इधर ही है, कांटेक्ट कर लेना मुझे। Zin's 2 more मत लिख भाई. 2 है यहाँ पे, कांटेक्ट कर लो भाई. एक बार व्हाट्सएप लिंक भेज दे. James. व्हाट्सएप I love लिंक James भाई. होगा। दोबारा जिंक्स तो से. उस दिन भी जीता था ना। ये दूसरा जिंक्स है, GYNX वाला जिंक्स. आई एम हियर. यस यस आई सी यू. यू आर हियर. यू वन द 50 डायमंड्स. व्हाट्सएप लिंक मिलेगी, उसमें हमारे एडमिन से कांटेक्ट कर लेना, अपनी आईडी प्रोवाइड कर. गेट विद इन. यस द लास्ट पर्सन हियर, द लास्ट पर्सन हु गेट्स दैट 50 is gonna. Congratulations Jay for winning 50 diamonds. ओए 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 सही में हो गया. होली शिट, होली शिट, होली शिट. ऐसा कमेंट पढ़ रहा था भाई. कंग्रेचुलेशन जय भाई, 50 डायमंड भाई जीतने जीत के लिए गया भाई. भाई, फाइनली भाई, रोते कहीं पे तो जीत धोते गया, घसीटते हुए आप जीत चुके हैं जय कहीं भाई. पे तो जीत गया भाई। भाई भाई ये काला जादू करके आया था भाई. लेट्स कहीं होप तो जय जीत गया विंस एंड मैं। जय विंस भाई. नहीं भाई, क्रेजी भाई, क्रेजी शिट भाई. आज क्या हो रहा है भाई? 2 बार क्वेश्चन जीत गया. नहीं भाई. भाई एब्सोल्यूट सिनेमा भाई, पूरे भाई अब कभी छह सात बोलोगे, आठ अब महीने तो पे कास्टर लाइफ में पहली बार जीता हुआ, आई थिंक, है ना। भाई अब मत बोलना रेड गया भाई दूसरों की स्ट्रीम पे जाके. कल इजूमी की स्ट्रीम पे जाना, बोलना रेड नहीं था. कल बोलूंगा ना। अनलकी नहीं. फाइनली पार्ट भाई, ऑफ लाइफ भाई. तुम 8,000 स्क्रीनशॉट रुपए ले, जीते हो भाई. स्क्रीनशॉट ले, सुन सुन भाई सुन, उसके स्क्रीनशॉट लेके इजुमी मैम को भेज रहा हूँ, भेजो इजुमी भेजो मैम को भेजो. भेज रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेके कि भाई देखो बिना रिक्ट के नाम आता है मेरा। रेड सनी काला जादू किया. मैं नहीं किया, तूने किया भाई. मैं तेरा कमेंट पढ़ रहा था. आई थिंक दैट एंड बेस्ट इज अनलकी क्यों भाई? यू वन 8,000 INR भाई. व्हिच वन शुड आई कांटेक्ट? लूट को कांटेक्ट कर लो कि चिराग को कांटेक्ट कर लो? रियूल क्या लूट, किसी को भी कर दो. आई वुड प्रेफर रियूल को कर दो.
I ठीक think है with भाई। that क्या नहीं करना चाहता एंड करते हैं यार मोबा राइजिंग स्टार सीजन 3 दैट इज गोना बी द लास्ट सीजन फॉर मोबा राइजिंग स्टार भाई इसके बाद कुछ नया टूर्नामेंट निकाल मोस्ट प्रॉब्ली गोना बी रजिस्टर का 3-3 पे खत्म कर रहा है। हाँ मैं 3 के आगे नहीं जाता भाई 3 टूर्नामेंट ये दैट्स सब इट अभी भी गिव अवे चल रहा है अमित की सैलरी काट के दे दें क्या गिव अवे इट्स स्टार्ट चल जाएगा यार पर आपकी सैलरी काटनी पड़ेगी हाँ अभी कुछ नया नाम से लाई हो ना। हाँ नेक्स्ट टूर्नामेंट आई थिंक वी आर गोइंग टू गो फॉर 50,000 हाइप इन गेम माय नेम आपका गुडनेस। नाम है तो स्क्रीन में दिख नहीं रहा क्या आपको? अब इसको इसका नाम दिखा यार। मेरा नाम नहीं है स्पिन में भाई ये तो रहा हाइपिंग जूम हाइपिंग गेम नेम आपका नाम मेक फॉर बिग टीम if you want you can sponsor us the money you guys win I think उससे बाद फिर 50,000 का फिर तब आ जाएंगे लॉल। अरे वेरी टफ है यार वेरी टफ राइट 50,000 का ही है एनीवेज 50,000 में सनी I think mid teams can come you guys can come but it's इतना थोड़ा सा टफ है थोड़ा सा मुझे पुश that's the thing अब इस चीज़ हो जाएगा रे। मोस्ट प्रॉब्ली जनवरी एंड बाय द वे अभी बहुत अच्छा गया है ये टूर्नामेंट है ना। टूर्नामेंट तो और अच्छा पहला गया प्रॉपर टूर्नामेंट था। हाँ पहला प्रॉपर टूर्नामेंट था जहाँ पे मैंने लिटरली कास्टिंग किया है टाइम टू टाइम। हाँ रियूल का गाली खा के बात अलग है। भाई टाइमली आएगा भाई। ओ भाई मैं टाइम लिया था तेरा एक ही बॉयफ्रेंड है जो टाइम लिया आता है भाई वो शिंदा लोगों को बुलाकर। चलो आई थिंक नहीं गाइस भाई उसके बाद वी नहीं आर आता। गोइंग टू टेक अ ब्रेक वी आर गोइंग टू गो फॉर गुड नाइट नहीं करते हैं भाई कल कल जो छुट्टी करे भाई पूरी पार्टी चलेगी अब से तो क्लैन भाई वॉर्स होगा भाई। यस वी हैव कल क्लैन सुना वॉर्स नहीं एज है। वेल अभी क्लैन अभी वॉर्स में सुना थोड़ा नहीं है सनी। एक्साइटिंग चीज़ है भाई नहीं सुना भाई नहीं एंड क्लैन वॉर्स के बारे में बता देता हूँ गाइस मैं थोड़ा सा स्नीक पीक दे देता हूँ इस बार क्लैन वॉर्स के स्टेट्स आर गोना बी हाई वेरी हाई क्योंकि हर चीज़ रियल होने वाली है यू माइट हैव बता दूं क्या रूल बताते भाई। दिस टाइम क्लैन वॉर्स में आईएनआर आने वाला है जो प्लेयर्स खरीदे जाएंगे वो आईएनआर के थ्रू खरीदे जाएंगे जो बिडिंग होगी वो रियल मनी से होगी एंड वो मनी प्लेयर्स को जाएगा ठीक है टीम लीडर्स विल गेट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ आईएनआर एंड थ्रू दैट आईएनआर यू गोना बिड फॉर प्लेयर्स एंड जितना तुमने बिड किया है वो उस प्लेयर्स को मिलेंगे एंड 4 क्लैंस है भाई दैट्स द थिंग नेक्स्ट टूर्नामेंट कब है मोस्ट प्रॉब्ली जनवरी एंड वी विल हैव द रजिस्ट्रेशन थोड़ा सा करना है एंड हाउ टू रजिस्टर यू जस्ट हैव टू बिड मी आईपीएल ऑप्शन यस रियल आईएनआर इज कमिंग भाई क्लैन वॉर्स में लीडर्स को भी आईएनआर आई थिंक वी विल प्रोवाइड लीडर्स हैव अ चॉइस वो अपनी जेब भरना चाहते हैं कि अपनी क्लैन को आगे बढ़ाना चाहते हैं दैट्स द थिंग लास्ट स्पिन भाई 50 का लास्ट दूं क्या भाई हाइपर भाई ने बोला लास्ट स्पिन करने का तो 50 का लास्ट स्पिन है भाई दैट्स गोना बी द लास्ट स्पिन भाई आई डिडंट विन इन रैंक्स भाई कितने स्पिन कर रहा हूं तेरे बोलने पे लास्ट स्पिन करवा रहा हूं भाई हाइपर गेम दिस इज गोना बी द लास्ट स्पिन हियर जो जीता इज गोना बी 50 डायमंड्स हाइपिन गेमिंग जीत गया हाइपिन गेमिंग जीत गया लेट्स व्हाट द फक भाई भाई हाइपिन गेमिंग यू वन भाई खुश हो जाओ भाई तुम जीत गए भाई मतलब मेजॉरिटी ऑफ क्लास 12 कैन प्ले इट्स गोना बी फॉर 10 to 15 days इवेंट्स भाई हाइपिंग गेम नाम है रीच आउट टू अस व्हाट्सएप है वहाँ पे मैसेज कर दो यू विल प्रोवाइड कर दो व्हाट्सएप लिंक मैं तो प्रोवाइड कर रहा हूँ दोबारा प्रोवाइड कर लो हाइपिंग गेमिंग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो यार एक बार और एडमिन्स किसी भी एडमिन्स को नाइस इग्नोरिंग यार मुझे 400 दे दे तेरे को तो 1000 देने वाला था डायमंड्स पर तू 400 कह रहा था चलो 500 दे देते हैं अभी स्टीजी अभी नहीं आएगा 2-3 दिन में लिंक आ जाएगा या तो कल या परसों आ जाएगा this लिंक तो we will उस be पर ज्वाइन कर posting the लेना। link in our WhatsApp groups
कमेटी में भी पोस्ट किया जाएगा, डिस्कॉर्ड पे भी पोस्ट किया जाएगा. It's gonna be bunch of games related to MLB. You have to be present there भाई. वैसे मिथिक टीम्स के प्लेयर्स को कोई नहीं लेता भाई, याद रखना. ओए ओए, लिया तो था भाई, एग्जीक्यूटर को लिया था. सब बिजी रहते हैं. भाई एग्जीक्यूटर तो वो फ्री था. हमारे बोर्ड होगा इस इजी पर मैम भाई. आ गए. पढ़ाई इज इम्पोर्टेंट भाई. यस अब इज इजी फ्रॉम यामा भाई. हिल्डा भाई जो लॉट के टाइम पे नीचे 5 मुझे वो याद है भाई. और ही वाज ट्राइंग टू आउट प्ले नीचे वाली बुश से जाके, और पीछे वाली बुश में जा रहा था क्योंकि वहाँ पे लापू लापू ने देखा, और वहाँ पे फिर कीमी ने भी देख लिया उसको. फिर 5 बंदे चढ़ गए भाई उसके बाद. बुरा लगा था भाई वो देख के. और इसने भाई बाद में फेडरिन को भी निकाला, कीमी को भी मार्क करता. ड्यूरिंग ऑल टीम फाइट्स, और तुमने नोटिस किया होगा इसने बोला भाई नॉट गोना सपोर्ट माय टीममेट्स, मैं वो कीमी मारूंगा भाई, स्पेशली इन द लास्ट. मैं कीमी जो टीम फाइट से बाहर रखता हूँ तो डैमेज आउटपुट शैडो स्पोर्ट्स से 30 और 40% वैसे ही कम हो जाए. एंड कीमी आगे आई नहीं भाई. तो तुम थोड़ा सा गेम एनालाइज हो गया. हाँ, और लास्ट में जो किनी को टर्निंग पॉइंट मैंने बोला नहीं कि वो जो किमी को मार्क किया लिटरली, तो डैमेज ही बचा नहीं लास्ट मोमेंट पे. और वहां पे 5 बंदे मिलके गैंग बैंग कर रहा था, मैंने वो भी अच्छे से डिस्क्राइब किया है भाई. लॉर्ड में 4v4 विदाउट थोड़ा सा हो रहा था. डार्क भाई थोड़ा सा लेट हो गया भाई. हाउ टू क्लेम, जॉइन द व्हाट्सएप ग्रुप, मैसेज द एडमिन्स एंड यू कैन क्लेम भाई. व्हाट्सएप ग्रुप पे नीचे हाइप इन गेम ज्वाइन कर लो, एंड उसके बाद एडमिन को रीच आउट करो. मुझे कर लो, आई एम लूट, या तुम रियूल को कर सकते हो. ओके आई थिंक विद दैट. हाँ बंदो स्ट्रीम चल पका मत यार, डालना नहीं. And I think with that we will be closing our stream by thank you every single one of you भाई. मतलब MOBA season 3 successful बनाया without any drama. One viewer, it might be a glitch from YouTube, and with that we are taking a leave. मिलते रहते हैं भाई. Sayonara, good night.